Okay, we had a very exciting day yesterday. A lot of good insights, lots of opening up. People have opened up, and also we heard some very good perspective at organization level and an intelligence group level. Very rich discussions. So I'll request my colleague Nupur to take us through yesterday's proceedings, and we come to the focus of the agenda today. Yeah. Over to you, Nupur. Thank you so much, sir. Siljo, may I request you to please share the presentation? Yeah. Right. So just a quick brief as to how we'll go for this session, since this is a very long session. So we have tried to kind of break it into parts, where first part I'll be sharing the summary of learnings or lessons from yesterday. And then we will be discussing about emergency coordination, where we'll be taking everyone through the unified response strategy SOP that we follow, and which will be followed by a brief group work and then open discussion. Then we'll be discussing unified resilience strategy. Similarly, it will be there will be a brief presentation followed by a group work and an open discussion. And then we'll also be discussing about how Sphere India, IAG, and SDMAs can work together, which will also be followed by an open discussion facilitated by Animesh and Prushti sir. Now, just taking everyone through the summary of learnings from yesterday. So we tried to collate some of these learnings that were shared during the session, some of the insights shared by the participants as well as panelists. So first, if we talk about the systems, as shared by Sudarshanji, that there is a need to unlearn and develop new ways of ideating as well as doing things. And then we need to build resilient and adaptive systems. And system strengthening should also be done through innovation of systematic as well as scalable and sustainable solutions. And there was also an emphasis on building local capacity for emergency response of local actors like Panchayati Raj institutions, and also involving grassroots level civil societies in the planning of emergency response as well as disaster management in general. So while there are effective rapid assessments during emergency, there is also a need. There was also a need for to understand long-term impacts of the disaster. So the assessment should not be just left at like immediately after the disasters, but also should focus on long-term recovery strategies. And there is also an increasing need to shift from the traditional tools or methods of disaster management to more innovative and sustainable methods. And then there was also an emphasis to involve youth in the disaster management activities, which was emphasized by IAG MP at various levels, be it communication, implementation, relief, and as well as decision-making activities. And also there was a concern, since the funding is typically allocated to large-scale disasters, there is a need to focus the attention on small-scale disasters as well. Now coming to the learning at organizational level. Siljo, can you change the slide? Yeah. Can you go back one slide? Yeah. Now, talking about the learnings at organizational level, first and foremost is understand how government can actually address the socioeconomic changes, and how civil societies as a collective body can support government in these programs. Then there is also a need to build local capacities and develop adaptive systems within the organizations. And successful implementation of evidence-based practices, which can be done through various SOPs, and also leveraging partnership so that the organizations can come together and respond together, which can also be done by leveraging tools like social media. And there is also a need for more partnership and collaboration to scale up sustainable interventions. And coordination should also be done at organizational level for fund flow as well as utilization. And economic efficiency in terms of utilization of resources is also very critical and should be analyzed.
And also another point was that learnings from the last two phases of COVID-19 should be identified, and looking at the current context, humanitarian agencies should have a toolkit to face and overcome if there is an emerging COVID-19 wave. And also more evidence-based interventions should be done, taking a bottoms-up approach. Now coming to the learnings from working with IAGs or for IAGs, there is a need for identification and mapping of climate vulnerabilities of states and build state IAGs capacity accordingly. And which can also be done by capacitating IAGs at district level and also strengthening coordination with the government. And Sphere India can also support in facilitating better coordination with NGOs, IAGs, and government. IAGs, another point was that IAG should officially be acknowledged by the respective state governments as a critical and significant emergency response system in times of emergencies. And IAG should also be involved in government disaster management activities and support the state governments in addressing the damage to the socio-economic fabric post any disaster or emergencies. And capacity building and linkage with the NDMA with better guidance and knowledge sharing can be done, which can be supported by HR, which can be facilitated by Sphere India and other actors. And Sphere India can also support in closely monitoring the funds allocated for DRR, which at times are often diverted to other causes. And also roadmap of Sphere India. Sphere India should develop a roadmap kind of to map the climate vulnerability of each state and develop a strategy with the respective state IAGs based on those vulnerabilities. And then so the partners, implementing partners, and the organizations working in the area know that what are the vulnerabilities and can plan according to it. So these were some of the lessons or learnings we were able to summarize from day one. And of course, we'll be doing a more detailed report of it that will be shared with everyone. So that is all in terms of summarizing the discussions and deliberations from yesterday. Over to you, Animesh, sir. Okay, so very well summarized. So, I'm missing Prusti sir here. It would really have been good to have him here. Nonetheless, we move forward to the agenda now. And I think the first topic is about emergency coordination through unified response system. और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे याद है कि 2010 में जब लद्दाख में फ्लैश फ्लड आया था, उसमें कुछ मौका मिला, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली मुझे वहाँ पे जो रिस्पांस वगैरह हो रहे थे उसको इवैल्यूएट करने का, एसेस करने का. सो वहाँ पे हमने नोटिस किया कि लेह जो कि एक स्पॉटलाइट था उस फ्लैश फ्लड का, वहाँ पे रिलीफ एजेंसीज वगैरह जो हैं, काफ़ी सारी रिलीफ एजेंसीज वगैरह काम कर रही थी, और दूसरे एरियाज जैसे चोगलमसर और बाकी एरियाज जो इक्वली अफेक्टेड थे, वहाँ पे कंपैरेटिवली कम एजेंसीज काम कर रही थी. बस एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का असेसमेंट करके हमने ये देखा कि लेह में तकरीबन दूसरे एरियाज जैसे चोगलमसर और बाकी एरियाज जो फैमिली को वहाँ पे कंपैरेटिवली कम एजेंसीज काम कर रही थी कंपेयर्ड टू ब्लैंकेट्स. एंड बस एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का असेसमेंट. सो ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है, अभी तो हम काफ़ी इवॉल्व कर गए हैं. But I just wanted to kind of, highlight the importance of unified response, strategy, and how it helps humanitarian agencies who are collectively responding to any, specific disaster to better manage their resources. और जैसे जैसे बाकी डिजास्टर्स वगैरह आए, साइक्लोन फाइलिन और बाकी जगह पे जो हमारा एक्सपीरियंस वगैरह था, वहाँ पे हमने देखा कि यूआरएस सिस्टम जिस तरह से आया, उसने ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस में आपका डुप्लीकेसी और
उसको रिमूव करने के लिए और कोऑर्डिनेशन के थ्रू एफिशिएंसी अटेन करने के लिए काफ़ी योगदान किया। बट आज हम जहाँ पे खड़े हैं, हमारे लिए सवाल ये है कि जो यूआरएस सिस्टम है वो क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के हर साइकिल में इक्वली अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस पे वी आर रियली एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू यूआरएस सिस्टम, और बाकी एरियाज में हमें काइंड ऑफ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो सेशन है, नुपुर विल बी मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम एक ओपन डिस्कशन भी करेंगे। सो it is equally important to share and highlight those pointers which helps us to kind of improve in this domain. So जो भी challenges हैं, जो भी areas है जहाँ पे कमी रह गई है, मेरी आप लोगों से ये request है कि उन सारे pointers को निकाल करके लेके आएं। मेरा जो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है उसमें मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ रिस्पॉन्सेज वगैरह में जब आपका रैपिड असेसमेंट की बात आती है वहाँ पे वी हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, क्योंकि एक समय था जहाँ पे वी हैड आवर ओन स्ट्रगल्स टू कम अप विद असेसमेंट, जॉइंट रैपिड असेसमेंट रिपोर्ट्स एंड ऑल. There were agencies who would come up with their own reports, but and that was a very useful piece of information. But collectively, जो रैपिड असेसमेंट का जो कैपेसिटी है वो पिछले कुछ सालों में definitely we have improved on that. When it comes to data collection or data sharing in through the URS matrix and all, उसमें भी I'm pretty sure that many agencies are coming forward to share the information, and that has helped us to know कि कहाँ पे कौन सी एजेंसी किस तरह का काम कर रही है, and also probably helps us to kind of better plan our strategies. स्फीयर के डोमेन से अगर मैं बाहर जाऊं तो कुछ डोनर एजेंसीज भी इस तरह से प्लान करते हैं जिसमें इस तरह का कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग और डिजाइनिंग के दौरान ही थोड़ा बहुत सेटअप हो जाता है. संजय जी हैं यहाँ पे और स्टार्ट फंड में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं. तो जिस तरह से प्लानिंग, डिजाइनिंग और बाकी चीज़ें जो होती हैं इस तरह के पूल फंड में, उसमें भी जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है वो डिजाइनिंग स्टेज में हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक इंश्योर हो जाता है. तो let us try to bring and highlight those pointers which help us to kind of improve in this domain. हम अपने इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा improve कर सकें, and beyond a specific aspect of the work where we are already doing good, how we can also improve on other domains beyond assessment. Say when it comes to kind of a unified response, say for example in WASH or cash based program or shelter, उसमें किस तरह से maybe agencies can come together, share their expertise, share their pieces of work, and how we can collectively improve. So that is my personal expectation, and I'm looking forward for the presentation and then open discussion here. Thank you. Over to you, Nupur. Thank you, Animesh sir. So what we'll do, we'll be taking everyone through a brief literature and the SOP that we follow for unified response strategy. We've also distributed a copy of this SOP on each table. So when we proceed to group work, you can be a group within one table and discuss how we can improve this SOP. So just taking everyone through to what is unified response strategy. So basically, it is an action-based approach which was started with a rationale to build common understanding among different stakeholders for a more organized and coordinated response. So the basic objectives behind that was to initiate and strengthen interagency collaborations as well as coordination, and to institutionalize common assessments, common response planning, and common monitoring and evaluation in the interagency process. And also I think Prusti sir is Yeah. here in the hall. Prusti sir, if you can please join us here. Right.
And another objective of unified response strategy is to enhance greater preparedness and quality response by humanitarian agencies. Now, as Animesh sir also reiterated with the examples that why we need such kind of strategy. So talking about the need for URS, first and foremost is to avoid duplication. And it also helps us document past experiences as well as lessons, along with ensuring equitable distribution of relief and and to avoid social exclusion, and also complement government relief efforts while overall improving the humanitarian standards in terms of time, quality of response, and promote 360-degree accountability. So I'll just very briefly take everyone through the standard operating procedure that we follow for unified response strategy. So these are the steps which I'll be taking everyone through the various steps, which will include procedures, factors, and responsibilities, as well as indicators and timeline. A detailed copy of the same has been shared on each table. You can also refer to that. And coming to the steps, one is how we start the process is that we follow throughout the year is through early warning and monitoring, which is done by Interagency Coordination Program of Sphere India throughout the year. Then when we see any emerging situation, we issue alert and reports, which is disseminated on our social media as well as WhatsApp network and Google URS groups. And once we know that a critical situation is emerging, there is an emergency preparedness meeting with the IAC Interagency Coordination Committee at a national level, and IAGs are also IAG meetings at state level. So these meetings help us to facilitate to take action, immediate action on account of frequency and intensity as well as risk of this of a particular emergency. Then 2 to 4 hours within the disasters, we prepare the situations report which are disseminated in our networks. And within 24 hours, there's a meeting of IAC committee as well as IAG to kind of monitor the situation and find a way forward. Next, based on these meetings and these discussions, the URS is activated. And so there are certain steps that follow once the URS is activated. One is a secondary analysis report is prepared, which acts as a baseline report, which takes care of the existing situations as well as some of the arising situations based on the media reports and other secondary information. And a real-time mechanism for real-time feedback mechanism is also institutionalized, and a URS matrix is activated. So this URS matrix helps us to document the responses by various member organizations or the network organizations. It tells us who, what, where, and when they are doing these interventions as to avoid duplication. And as a recent development, PAC, Protection Against Sexual Exploitation and Abuse, implementation and mainstreaming has also been incorporated within this SOP. Next, we have, based on the situations and the secondary report, a decision happens whether a joint rapid needs assessment is required. And post the disaster, within 48 hours, an interim joint rapid needs assessment report is produced. And by 96 hours, we have the final report. And while this process is happening, sectoral committees are also activated who contribute to the report as well as the tools that are mobilized during these needs assessments. And multi-stakeholder meeting also happens within 48 hours where the interim findings are shared with this group. And based on the situation, there is a provision for having continuous assessments or having a detailed sectoral assessments. And based on once the situation kind of calms down, the closure of URS happens. So while I took everyone through the basics of how this process works, more details of it are there in the document that has been shared at your table. So with this, Animesh sir, we can have a brief group work for like 10 minutes where each table can be one group, and you can go through the SOP and
We are looking for your suggestions and recommendations on how we can improve emergency coordination, which can be done through the URS and other methods. Vikrant, sir, you'll have. Yeah, I just want to request maybe some tables can join, maybe instead of two people here, you can join on the table where, we have at least 4 or 5 each table. The group discussion can happen good. Yeah. My colleagues behind, Vishnu, all of you are very critical in these SOP actions. Please join different tables. Yeah. So we'll close group discussion exactly at 9:45, and then we will proceed to share the discussions. One representative from each table can share the discussion, summary of discussions from their tables, or it can be open discussion.
So we have last 1 minute left for discussion. I would request every group to kind of, summarize and. Okay, so I think the time is up. So I would. Okay, may I have your attention, please? Nupur, what I would suggest is that we go to every table and ask them to very briefly summarize their discussion points, maybe 2-3 points, and then we come to Prusti sir for conclusion. हेलो सो हमने ना 2 ही पॉइंट्स पे हम ये कर पाए अभी तक, क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसे समझने के लिए वक्त चाहिए। 10 मिनट काफी नहीं है, आई एम सॉरी। सो पहले जो 2 पॉइंट्स है, अर्ली वार्निंग एंड मॉनिटरिंग, उसमें हमने एक पॉइंट ऐसे डिस्कस किया था कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम मैनेजर और आईएसी और आईएसजी के साथ है, वेयर पॉसिबल ऐसे लिखा है, वैसे ही वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम मैनेजर कैसे हैंडल कर सकता है या उससे कैसे पता चल सकता है। इसलिए देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ लोकल पीपल, ऐसा एक ग्रुप एस्टेब्लिश करना चाहिए, ऐसी एक टास्क फोर्स या वॉलंटियर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो पॉसिबल है विलेज लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, उनके तरफ से वो सजेशंस आनी चाहिए, उनके तरफ से वो पॉइंट्स आने चाहिए आईएजीस के पास, प्रोग्राम मैनेजर्स के पास, ताकि वो उसका आगे जाके और अच्छा इस्तेमाल कर सके मॉनिटरिंग के लिए। सेकंड जो पार्ट है अलर्ट रिपोर्ट्स बिफोर डिजास्टर है, यहाँ पे भी हमने ऐसे डिस्कस किया कि जैसे हमने लिखा है कि लोकल ट्रांसमिशन और कम्युनिटी ट्रांसमिशन, लेकिन उसमें भी अगर पिछले जमाने में लोग कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करते थे अलर्ट्स के लिए, तो क्या हम वो मेथड्स यूज कर सकते हैं? क्या वो हम ट्रेडिशनल जो चलते आ रहा है वो क्या हम उसे इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा वो अलर्ट्स पहुंचा सकते हैं क्या लोगों तक? तो ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे मेरे ग्रुप में, टाइम नहीं मिला सो इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू नूपुर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे कल बात हो रही थी कि छोटे छोटे जो डिसास्टर्स हैं या हजार्ड्स हैं वो हम लोग कहीं देख नहीं पाते, कर नहीं पाते, और 2 ऐसे हजार्ड्स हैं जिनमें मेजर हजार्ड से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, स्नेक बाइट और लाइटनिंग। यूपी का एग्जाम्पल है तो मोर देन 500 डेथ्स आर बीइंग सीन इन 1 ईयर इन ईच डिसास्टर, और इन दोनों हजार्ड्स को हम कहीं कैप्चर नहीं कर पाते हैं। स्नेक बाइट एंड लाइटनिंग, ऐसे छोटे छोटे हेल स्टॉर्म है, आपका अभी तो टिड्डी दल की बात हो रही है, उसके लिए कुछ प्रोविजंस हुए हैं, लेकिन हेल स्टॉर्म और कोल्ड वेव को कैसे इंटीग्रेट करें,
कैसे प्रूव करें कि इसकी डेथ कोल्ड वेव से हुई है या कुछ और है। तो इनको भी हमें लेने की जरूरत है कि इसकी वार्निंग इशू करें। आईएमडी जो वार्निंग्स देती है वो शायद समझ के बाहर है लोगों के। तो आईएजी लेवल पर, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। और पूरा जैसे कहते हैं एक चेन ऑफ कमांड की बात कल हो रही थी कि नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को कैसे इंटरलिंक किया जाए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा। और जैसा अभी कहा किसी ने कि 15 मिनट बहुत कम है इसके लिए बात करने के लिए, तो वी नीड टू हैव बेटर ऑप्शन फॉर दिस। और हमें स्टेट पर और डिस्ट्रिक्ट पर भी इस तरह के डिस्कशंस को रखने की जरूरत है। वो यहाँ करने से थोड़ा दिक्कत होगी अभी। तो लेट्स डू इट, और इसको फिर कॉन्टेक्चुअलाइज करें कि किस स्टेट के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तब नीचे इसका यूज हम लोग ज्यादा कर पाएंगे। थैंक यू। Good morning. This table has struck out few points. पहला जो है हमारा जो yearly warning and monitoring. So the timeline has mentioned the throughout the year. So we have suggested during the monsoon. So we need to have frequent monitoring the situation, because in certain monsoon time there is a chances to flood and cyclone. So although the frequency has mentioned the throughout the year, but certain time period you have to need more focused. And regarding the emergency preparedness meeting, it has mentioned at a national level, then state level. So first, we need to have a more proactive role at state level. Then we need to focus at the national level coordination meeting, because all kind of disaster is happened at the state level. Those are the stakeholder based at the state level. They should have a more proactive role, and they need to have a capacity in that line. And the timeline is the before disaster is mentioned. So even if we need to have a focus throughout the year and a certain time period, how we can more focus in based on the situation. And fast sea trap mention of 2 to 4 hours. Actually, this is a very less time period. So 4 to 6 hours can be fine. So that would be the ideal time we need to prepare the fast sea trap. Then there is a interagency real-time feedback mechanism and helpline. So at that time, you need to focus some of the government publication and alert note, and we need to have a more coordination with government department, state and district level, because they have their own strategy and how we can collaborate with the departments and SDMA and DDMA. So that should be planning, because many times we have seen ki the IAG is confined with the few national or international level NGOs. So how the other partner and stakeholder can be part of this IAG, so that the effective coordination can be happen. And even if the very grassroots level NGO, those are the local based, how we can more collaborative with them regarding their local situation, yearly warning alert notes. So that should be one of their strategy in certain situation. So these things we have chalked out within very limited time period. But my colleagues can be share if anything. There's nothing to say, but the time was very less to go point by point. That is the whole thing. And the first thing is that first one point that we have discussed, that early warning and monitoring and also the alert reports, it is a transboundary kind of thing. So for like upstream matters more in these cases. So so that coordination is required very much, like Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Assam. So this coordination is required very much to be more effective on this. Thank you.
नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे टेबल पर वी हैड representations from Uttarakhand, Jammu Kashmir, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, and 2 experts from Dalit Adhikar Manch, Prasad ji himself. So we discussed only about inter-agency group, its functioning and the challenges. And कुछ कोऑर्डिनेशन की जो बातें आई उसमें एक थी कि कोऑर्डिनेशन एक टाइम और मनी दोनों इसमें लगता है, तो वो एक चैलेंज है जिसके कारण स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर अगर मीटिंग होती है तो उसमें बहुत एनजीओज नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं क्योंकि उनका समय लगता है और पैसा लगता है वहां तक आने के लिए। खासकर हिली एरियाज में तो और भी कॉस्ट पड़ता है और प्लेन्स में भी ये डेफिनेटली पड़ता है, दूर से आने में पैसा लगता है, तो वो मीटिंग्स में नहीं आ पाते हैं। एक पहली बात ये है, तो कोऑर्डिनेशन में वो चैलेंज एक ही आता है। दूसरा चैलेंज है कि हर बार आने का फायदा क्या है, ये होता है हमें क्या फंड मिलता है, नहीं मिलता है। एनजीओज की बात हम लोग अब आपस में कर रहे हैं। नॉलेज मिलता है तो शायद वो भी नहीं मिलता है। अगर कहीं कहीं नॉलेज मिल रहा है तो नॉलेज के लिए लोग आते हैं कि चलिए कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, मंथली मीटिंग हमारी हो रही है, तो कुछ नॉलेज डेवलप हो रहा है किसी सेक्टर के बारे में, कुछ डिटेल। तो वो 2 चीजें हम लोगों ने बात किया, ये 2 चैलेंजेस है जिस पर हम लोगों ने बात की, और 10 मिनट का टाइम में इससे ज्यादा हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए थे। थैंक यू। अच्छा, एक पॉइंट और मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि जो हम लोग मिस करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से आईएजी के कोऑर्डिनेशन के रेफरेंस में, कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि एसडीएमए को हम ये कन्विंस ही नहीं करा पा रहे कि जियो एनजीओ कोऑर्डिनेशन प्राइमरीली आपका डोमेन है। हम लोग तो एक्टर्स हैं उसमें। डीएम एक्ट देख लीजिए या स्टेट का या नेशनल पॉलिसी देखेंगे तो उसमें जियो एनजीओ कोऑर्डिनेशन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग इस लेवल पे एडवोकेसी भी नहीं कर पा रहे कि भाई साहब आपका काम है। होता क्या है, जब मॉनसून के बाद में फ्लड्स आती हैं तब वो आनन फानन में ढूंढते हैं एनजीओ को, और हम लोग करते भी हैं क्योंकि वो अपना वैल्यू सिस्टम उस तरह का बना हुआ है। बट इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए एडवोकेसी जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं है। तो वो हम लोग भी कई बार ऐसे ही कि अच्छा बनने के चक्कर में हम वो उन्हें समझा ही नहीं पा रहे कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज आई थिंक इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस। बस हम जोड़ना चाहेंगे, ये तो राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर की बात है, जो खास करके जो आपदा से जो प्रभावित होते हैं उनके बीच हम बात करना चाहेंगे। ये जो आपदा से प्रभावित सिर्फ हम देखते हैं, चाहे एनजीओ हो या गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, वह सिर्फ आपदा आई और कुछ हम देने की तैयारी में होते हैं, स्वास्थ्य के संबंध में या फिर फूड के संबंध में, या कपड़ा देते हैं, जो कुछ देते हैं। लेकिन आपदा से फिर पूरे उनके 1 वर्ष का आपदा रहता है। आप पूरा देखते होंगे, जो उत्तर बिहार के जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको हम वल्नरेबल कहते हैं, वो बाढ़ आया और फिर घर में नहीं रह पाते, वो फिर बाहर निकल जाते हैं, इसको देखेंगे। और प्रवासी मजदूर होने का कारण यही है कि बाढ़ के आने के समय हम कुछ दे देते हैं, लेकिन बाढ़ से प्रभावित जो होते हैं, जैसे वो मजदूर लोग हैं, पट्टे की खेती लेते हैं। अब पट्टे की खेती 10,000 और 15,000 रुपये बीघा होता है, और 15,000 रुपया इकट्ठा करने में जो बाहर कमाई करने आते हैं, वो 1 साल में चला जाता है, फिर वो कमाई करने के लिए आते हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी बातें हैं। तो वो सर्वाइव आगे कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा वहाँ आपदा आएगा। अब आपदा का तो घेराव बढ़ता जा रहा है, आपदा घेरा बढ़ते जा रहा है, तो हमको लगता है ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि इनको हम सर्वाइव के लिए, खास हम समाज के जो एक इज्जत पाने योग्य जो है, इनकी कैसे हम देख सकेंगे। तो गवर्नमेंट हो या हम एनजीओ लोग कैसे उसको एक इस पॉलिसी बना सकेंगे, ताकि हम जो है इनको जीवन। और बच्चों की पढ़ाई की तो देखेंगे, पढ़ाई तो होती ही नहीं है। उत्तर बिहार की पढ़ाई अगर देखेंगे, खास करके एनसीडीआरएच और बीआईजी में जो काम करने का जो अवसर मिला दलित अधिकार मंच का, तो उसमें मैं देखा जाकर के बच्चे पढ़ाई तरीका से नहीं कर पाते। उनको कभी टेस्ट कर लीजिएगा, जिनके बीच वैसे अगर होगा तो टेस्ट करेंगे, वह नहीं होती है। तो इसको देखना हुआ, यही कारण है कि वहाँ के दलित और दक्षिण की भारत के दक्षिण बिहार की दलित, दोनों में अंतर पड़ेगा। तो इसको लगता है ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि वहाँ कैसे इनको मुख्य तो नहीं, लेकिन जीवन के जो जो मानव का जो अधिकार है, वो हमको लगता है कि जीवन का अधिकार से जोड़ के देखना चाहिए। जीवन के अधिकार में हम कैसे इसको समाहित कर सकें, कैसे ला सकें, बस ये मैं कहता हूँ। Good morning. I think this is working.
Is this? Okay. So, thanks. So good morning. हमारे जो ग्रुप है ना, हमारे ग्रुप में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से रिप्रेजेंटेशन है और हमारे में ऑर्गेनाइजेशन से भी रिप्रेजेंटेशन है और कम्युनिटी से भी रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोगों ने एक साथ जो डिस्कशन किया, पहले तो थोड़ा टाइम गया कि बात हम लोग किस चीज पे कर रहे हैं, उसके थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश की। तो हमारे में लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं वहां पे सिर्फ इंटेलिजेंसी ग्रुप ही नहीं, दूसरे नेटवर्क वहां पे ज्यादा स्ट्रांग है और वो अपने जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस है उसके सहारे इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। तो हम लोग जब बात करेंगे आईएजी कन्वीनर या प्रोग्राम मैनेजर आईएससी की, तो वहां पे हम लोग को वो भी ध्यान देना जरूरी है कि हम लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, दूसरे नेटवर्क्स के लिए भी वहां पे जगह बनाए। और जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो एक ये भी चीज है कि हमारे जो आईएजी के मेंबरशिप है वो बहुत ही डायनामिक है। जो भी नेटवर्क्स है उसके मेंबरशिप थोड़ा डायनामिक ही होता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं एंड देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग टाइम टू टाइम एक साथ बैठे एंड वी डिसाइड कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग इट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन इट एंड इवन फॉर द आईजी सेक्रेटरिएट एंड द मेंबर्स। तो वो प्रोटोकॉल्स भी होनी चाहिए और वो ओरिएंटेशन भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए विथ रिफ्रेशर्स। एक ये हम लोग ने सोचा था। दूसरी बात हम लोगों ने सोचा कि अर्ली वार्निंग एंड अलर्ट रेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ आईएससी का या आईएजी का या नेटवर्क सेक्रेटरिएट का नहीं होता है, वो ये भी हो सकता है कि कोई भी मेंबर उसमें लीड ले सकता है एंड हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं जो कम्युनिटी में, उनके तरफ से भी ये आ सकता है। सो दैट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नीड्स टू फ्लो स्मूथली। एक ये था। और दूसरा था कि हम लोग डिजास्टर के तुरंत बाद अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन इज डिसरप्टेड क्वाइट अ बिट बिकॉज नेटवर्क्स आर हैम्पर्ड एंड मोबाइल फोन कनेक्शंस आर डाउन। सो हम लोग अगर ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पहले से ही सोच के रख सकते हैं। जैसे आई रिमेम्बर इन आईजी वेस्ट बंगाल देयर इज अ हैम रेडियो नेटवर्क ग्रुप which is very active in the whole IAG process. So इस तरीके से हम लोग पहले से थोड़ा अगर सोच के रखें तो it would be good I think. और एक और भी चीज उठ के आई है, एक दुख की बात है ये कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है जब हम लोग मीटिंग करते हैं शुरू में कोई हैजर्ड आ रही है, रिस्क इंफॉर्मेशन मिली, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे इकट्ठा होकर बात करते हैं एंड अपनी बात रखते हैं वहां पे। पर जब डिजास्टर हो गई and we are thinking about the managing the URS and monitoring the interventions in different areas, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो organizations resource contribute करती है उन्हीं की बात ज्यादातर सामने आ जाती है एंड जो रिसोर्स उस टाइम पे शायद नहीं कंट्रीब्यूट कर पाती है, वो कुछ पीछे हो जाते हैं। तो दैट शुड नॉट हैपन एंड केयर शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट वी लिसन टू एवरीवन and involve everyone in the process. So यही था हमारे तरफ से। So good morning all. I am representing from Manipur as a field coordinator, SPR India. So far we have discussed about this. I should share about our state. As cross-border villages are no network, the very hard challenges is no network situation. So we can reach there also. They can inform us also, and we can ask also due to network problem. So yeah, first of all, we have to strengthen the district level ISD by taking the regular meetings and giving the proactive processes like giving training to and of course training to the volunteers and the villagers also about the preparedness also. So the regular meetings and the strengthening process of IAZ to sensitize them what are the disaster risk reduction is the foremost important part for us. Thank you.
गुड मॉर्निंग। हमारे टीम में महाराष्ट्र, यूपी, बिहार एंड उड़ीसा यही स्टेट से हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारा टीम का जो कहना है कि हम लोग ज़्यादा और कुछ सोचने से ये है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है डिजास्टर को लेके। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसी के हिसाब से मैं उड़ीसा का बोलूँगा। मेरे पास ऑलरेडी ये पीपीटी भी है। विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज है जिसमें विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स बना रहता है, जैसे कि अर्ली वार्निंग टीम, इवैक्यूएशन टीम, मेडिकल एंड फर्स्ट एड टीम, शेल्टर मैनेजमेंट टीम, वाटर एंड सैनिटाइजर टीम, रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन टीम, ऐसे बना के 9 टीम्स है ऑलरेडी गवर्नमेंट के प्लान में। हम लोग को अगर इसी को ही इम्प्लीमेंट करना है, इसी को ही काम में लगाना है, तो मेरे हिसाब से, हमारे टीम के हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट का एग्जिस्टिंग है इसमें, तो हम लोग ज्यादा सोचने से पहले हम लोग अगर इसी को करेंगे तो कम्युनिटी के पास पहुंच पाएंगे और गवर्नमेंट भी डायरेक्टली लिंक हो पाएगा इसके जरिए से। थैंक यू। I'm from Leh Ladakh. लेह लद्दाख का जो रीजन है ऐसा है, बहुत ही स्कैटर्ड है। वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब जो लोगों की जो हैबिटेशन है बहुत फैला हुआ है, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। जब 2010 और 2014 में कुछ फ्लड आए थे, लेह में फ्लड प्रोन एरिया है। लेह का जो जितना भी जो विलेजेस है बहुत ही फ्लैश फ्लड काफी आते हैं। तो लेह से 15 मिनट का डिस्टेंस है एक गांव। 2014 में वहां पर फ्लड आया था, तो वैसे 15 मिनट में पहुंचते थे लेह से जो उस गांव में, मगर जिस दिन फ्लड आया था वहां का कम्युनिकेशन सब कट हो गया था, बिल्कुल नदी वदी में फ्लड आया था। तो अगले 2 दिन के बाद ही वहां पर पहुंचा। तो इसका मतलब कि विद इन द विलेज में ये जो प्रिपेयर्डनेस होना बहुत ही जरूरी है। विद इन द विलेज में जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, या विलेज लेवल पे जो, या पंचायती सिस्टम हो, या विलेज लेवल पे जो डिजास्टर का कोई टीम बना के रखे, तो विद इन द विलेज में ये होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो फ्लड में या इस तरह की जो इमरजेंसीज में इमीडिएटली रिलीफ या रिस्पॉन्सेस होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं मानता हूँ विद इन द विलेज में तैयारी होना जरूरी है। दूसरा, जब ये इस तरह के फ्लड आते हैं तो जितना भी एनजीओस हो या गवर्नमेंट हो, जितना भी स्टेक होल्डर्स हो, उन लोगों में खासकर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होते, अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। तो यहाँ ले में ये IAGs वाला वो कंसेप्ट नहीं है, ये इसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, अपने लेवल पे काम करते हैं। तो ये भी मैं मानता हूँ बहुत ही ज़रूरी है। अगर वहाँ पर भी ये इस तरह की इंटर एजेंसी ग्रुप का कोऑर्डिनेशन कर पाए तो अच्छा है। तीसरा, मैं मानता हूँ जो हर लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, कि डिस्ट्रिक्ट से लेकर, ब्लॉक से लेकर विलेज लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। गुड लक टू यू। So thank you for these pointers. I would request Prusti sir to kindly share his views. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज इकट्ठे हुए, और I feel privileged that I'm with you all. Very interesting discussions. So I'll go to the history a bit about URS, and then I'll try to share my views and suggestions and ideas as to how we can really make URS a very effective and efficient exercise. When this URS was conceived about 2 decades ago, it was thought that unified response strategy, and response has got elements like understanding the situation, assessing the situation, and
responding to the situation. So URS ends with response, and if the disaster is a very localized disaster, as a response you have done, and then you phase out, you close the URS. We have been able to perfect our act in terms of understanding the situation, assessing the situation, and coordinating to act. But still we have to think that how we can really act in a unified manner. Because disaster response mandates, the humanitarian principle mandates that we humanitarian organization, humanitarian professionals, that we act fast and we act in a targeted manner. That means we reach out to the last mile, the most affected community and most affected area. So, and then we pool our resources and act fast. What happens that we still, in fact, three decades ago, when we are talking about disaster coordination, disaster management coordination and all that, the problem was that we want to act alone. And today we have been able to come together, that at least we are talking to each other, understanding each other's strength, each other's weakness, and coordinating with the public system and all that. Those so many things have happened. But still we are away from acting together. So let us think that how we can act together. This is my first thought. The second is that you have seen this Disaster Management Act and in disaster management institutional structure, disaster management policy, planning, everything is happening and pretty fast. A lot of things are happening, and India is setting a benchmark on disaster management in whole world. And you should feel proud that all your work that you have done over years, all these humanitarian community, humanitarian professionals I'm talking, that all your work, all your knowledge has contributed significantly to this evolution of disaster management ecosystem in India, which is making a lot of contribution to the whole world. If you look at the disaster management professionals in the world, you will find very large number of people are from India. And all these people have come from the organization like yours, where you have worked, where we are working. So our contribution to the disaster management ecosystem is very unique. In that context, while we feel very proud, we feel very happy that we are making contribution, but there is also, we have to still evolve and still develop. Like number one, we have got disaster management, the response protocol at the national level. We have got the NDRF. And then many states have also gone to the level of, they say that similar in the line of NDRF, we will start SDRF. Many states have done and many states are still developing. Now, how we move, like I saw some comments, and there are many comments which are very valid comments, that talking at the state level has a limitation. But acting at the local level will only make the difference. But how do we go to that? We have created DDMAs. Yes, DDMAs have begun making a difference on ground. We are seeing, and especially in the Northeast, I'm seeing the DDMAs as becoming very, very effective and very active and all that. So because the crisis is much more, the situation is much more difficult in those areas. So DDMA has to become much more agile and all that. And I'm seeing that happening in Northeast, and I appreciate that. So how we take that from SDRF and DDMAs, how we take it to the community level, because the response starts at the community level. The community is the first responder, and the other institutional support will come. It will take time. It may take few hours. It may take few days, but the response has to happen at the community level. So therefore, there are some views came that we have got various teams, subject matter, thematic teams.
the disaster management policy talks about the thematic teams. But how does the thematic teams which are appearing in the policy, how does these thematic teams get a shape at the community level? Like I remember there are many large-scale disasters that happened, and I have seen that we work at the grassroots level and we talk about creating search and rescue teams at the community level. We give them training and all that. But do those teams, where they go? How do we keep that knowledge, keep that skill, transfer that skill to the next generation, to the next generation? How do we institutionalize that system at the community level? So all these things we need to think and we need to plan. And therefore, these now some organizations are talking about CDRF, community level disaster response force, like NDRF at the national level, SDRF at the state level, at the community level, they're talking about community disaster response force. And look at the government. Government is also now talking about Abda Mitras. They're giving training, they're starting. And very interestingly, if we have to be effective at the community level, we have to begin to work with that community level institution. What are those community level institutions? If we look at the government structure, the grassroots institution is the panchayat. If you look at the civil society structure, the grassroots institution is our local NGO, local CPO, SSG, youth group. These are the things. How do we bring a synergy between the government and non-government institutional structure at the community level? And if we begin to think that working with panchayat and working with this CDRF or Abda Mitra, in fact, I'll say that the CDRF and Abda Mitras are synonymous. They're the same kind of thing. So we work with the panchayat and help institutionalize this. So then we'll be able to, probably we'll be able to act fast and be effective at the cutting edge, at the level where the need is most. So that are the kind of thing. Then other type of questions that came, that for everything you need a resource. So how do we get resource? Like large NGO or middle-sized NGOs, national NGOs, local NGOs or international NGOs, they will be able to raise funds. But how do this community organization get fund? Today, the SSGs and all, they have got their mobilization through the community. But how do we help? How do we strategize creating some kind of a fund base at that community level, which can be used at the time of emergency? I remember 15 years ago, 20 years ago, I've seen in West Bengal, there are women's groups. They used to create disaster management fund because the floods will come, so they will have this. And that funds they used to use at the immediate response level. So how, when we have to think in that manner, because as we grow, we have to think deeper and think wider also. So these are my suggestions, are that how do we think deeper to create a meaningful structure that will be able to help us to create impact. Then another point that came is when our members, they come for the meeting, they look at, am I going to get knowledge or am I going to get resource? And it's very appropriate expectation. We come to an interagency group, or we come to a consortium, or we come to a platform for doing that. What we are going to carry back? So in terms of knowledge, so if we cannot give money, at least let us give knowledge. So we are creating knowledge at the national level, we are creating knowledge at the state level. How this knowledge is able to be created at the local levels and managed at the local level. Yesterday, I was tracking the discussion and I was extremely happy when I got to hear the idea that IAG West Bengal is thinking of creating Spear Academy in Bangla in West Bengal. You know, thinking like that, you have to go beyond the traditional setup, conventional setup, what we have been doing, that has helped us to come to this level. So we have to think that what are the next other things that we'll do so that it will take us to the next level.
तो हमको इस ढंग से सोचना पड़ेगा और हमको we have to do coordinations amongst ourselves. We have to do coordination with also the other humanitarian actors. Other humanitarian actor, I mean the government. Government is a very big humanitarian actor. We have to work with them in spite of all odds, in spite of all our discomfort. And because we are, our humanitarian principle says that we are working for the people affected in a humanitarian crisis. So that point of time, we have to really ignore our differences, ignore our misgivings, ignore our bad feelings, ignore our hatred or liking, whatever love and hatred, whatever it is. We have to come together for a particular purpose. Interagency is a combination of institutions and individuals for a particular purpose, and that is to deal with the crisis. So how is we strengthen that? How we would get out of the silos and work in a coordinated manner? So these are some of the points that I thought it will make sense. And time is very short, and these are the kind of discussion that need to happen in a detailed manner in other time, and with people coming from all parts of the country. And I'm so happy today to see people from Ladakh coming, people from Jammu Kashmir coming, people from Manipur coming, people from Assam. And 20 years back when we started this process, we never used to get people used to say that we represent them. So actually we have to, we cannot represent, we have to be there. And हमारा जो interagency group हम कर रहे हैं, this sphere always talks of a inclusive process. तो हमको हमारा जो interagency group है, हम interagency group को हमको बड़ा inclusive करना पड़ेगा. We don't think that we can represent somebody else. Yes, we can complement their voice, complement their sharing of information, but the voice coming from, like today, a gentleman coming from Ladakh, when he is talking about this real-time situation in Ladakh, do you think that by reading a document, reading paper and all that, and we'll say that situation in Ladakh is like this, will create impact? Today, listening to him is getting us to believe that yes, situation in Ladakh is very different from situation in West Bengal, situation in Uttar Pradesh, situation in Bihar. And the kind of situation explained by our friend from Bihar, the people who were at the field every year, they face flood, and how they survive. The survival is becoming the key component of the response. So these are the things that need to happen in a regular manner. So we have to think as a coalition, as a national coalition, we have to think how we take this experiment from the national level to the state level, to the district level, and to the panchayat level. Unless we be effective, I'm telling you today that if we are able to create a mechanism at the panchayat level, that is the grassroots level of at the community structure, we will not be able to create a greater impact. And in the day we are able to create that structure and process at the community, at the panchayat level, you will see that what we are talking for years and decades about on the disaster risk reduction or disaster management will get a sudden jump, and you will get a huge impact. And you will see the difference, that because at the panchayat level, people's understanding is very limited. So when we go there and build capacity, we work with them, their understanding will be much better. Today, they do not know except sanctioning construction of bridge and road. And when you go and work with them, they will say that in our budget, there should be risk reduction mechanisms. There should be emergency response provisions. This is the way we'll act. So all these things will begin to happen. There will be a demand on the system. Today, there is no demand on the system. So that is my views. And if time permits, then we can talk more also on the subject.
So before we invite Nupur for the next set of presentation on unified resilience strategy, I also wanted to share one of my points when it comes to URS. To be very brief, in my opinion, I believe that unified response strategy, we have only, managed to scratch the surface. And there is a long way to go when it comes here. I'll just give you a few examples. I represent CARE and I've worked with other INGOs also when it comes to humanitarian response. So, ideally in any post-humanitarian situation, community which gets affected by disasters, their needs are across all the sectors. They will have needs on food security, they will have needs on wash, shelter, protection and other domains. But जिस तरह से agencies जाती हैं काम करने के लिए, they go with their own set of expertise. कुछ संस्थाएं हैं वो wash के area में काम करती हैं, कुछ संस्थाएं जो हैं वो shelter पे काम करेंगी, कुछ food security पे काम करेंगी. और हो सकता है कि वो अपने डोमेन के अलावा एक दो और इश्यूज पे जिस कम्युनिटी में काम कर रही हैं वहां पे काम मतलब उनके साथ मिलके काम करें. बट आई हैव नॉट सीन अ सिनेरियो और अ सिचुएशन वेयर मल्टीपल एजेंसीज कमिंग टुगेदर टू कम विद अ यूनिफाइड रिस्पांस टू दैट कम्युनिटी. Say a disaster affected community, 4-5 agencies coming, ठीक है, I'll work on wash, I'll work on food security, and so that a comprehensive support is provided to that community. That usually does not happen. What happens is that agency is going, I'll work in these 10 villages, I'll work in these 25 villages. So wo hota hai, and because of that there is an unmet need which even when we move out there will be an unmet need in the community. To give an analogy to kind of explain this better, if you have to dress a baby and you're किसी को कैप पहनाना है, किसी को शर्ट पहनाना है, किसी को किसी की जिम्मेदारी पैंट पहनाने की है, कोई शूज लेके आ रहा है. So the baby will be fully dressed when everyone does his part of job. अगर हम लोग इस approach से जाएंगे, the truth will be half naked, which currently it is. That there are communities who have their needs, but agencies are going with their own agenda, their own set of expertise, which to an extent is right, but the coordination to that level is important. That when we start and work with those communities, we need to have coordination in ourselves to see that all their needs are met through humanitarian assistance and support, and जिसकी जो expertise है, जिसकी जो capacity है, उसके साथ मिल करके उन community को center पे रख करके काम करें. So that's my opinion, Vikrant. And if we manage to kind of have at least a demonstrative project where multiple agencies in a consortium approach coming and working together with the community in all phases of disaster before moving out from that locality, I think that would be the way to move forward. Yeah. In fact, what Animesh, he echoed my mind. I'm grateful to his narrating this example. In fact, when URS was conceived, the first attempt was made to what Animesh was explaining, that few organizations came together with expertise in various themes and try to act in a very, it happened in some 5-6 villages. It happened somewhere in probably Balasore or some, I've forgotten. So this attempt was made. And from there, this thought process about URS came. And then subsequently, when it was thought through and all that idea was designed, and that time we used to have a country director from UNICEF who is a strong believer of working with the civil society, and he jumped at it. And in fact, our first URS funding came from him during his tenure. And then we started working on URS and all that. Today, where we have got it, we are grateful to UNICEF for continuing this support. So what I want to add to Animesh's idea, that at the district level, can we create a network of this thematic organizations with this strength, thematic strength? And they'll say that let us do some hotspot check where there are many disasters. We will be able to know that where are the hotspots for those disasters. There are many disasters who happen certainly. So the predictable disasters, how this network can create predictable actions,
and then sudden onset disaster, how this the combined or consortium strength can move to that place where it has happened. So these two ways we can think, and we can start with a pilot, we can conceptualize, design and all that. And today technology is very helpful. Today, you don't have to come together on a particular place to just discuss. We can have a virtual discussion. You don't need to spend money to come and all that. And that's now to become a practice. So we can do that. But we have to conceptualize in from an end-to-end process, then we'll be able to put it on ground. So therefore, my submission to all of you is that let us look at the disaster response. I'm not talking about disaster management, total spectrum, disaster risk. I'm only saying that since we are talking about ERS, disaster response value chain. How disaster response, the response act, response action, how it unfolds, what happens, and how do we assess, how do we act, and how do we close. That if you look at that value chain and go into the nitty-gritty of each of the elements, you will be able to discover all those things are being talked today are the sub-elements of this value chain. And if we map it out, this can happen. The last point is that, can we think about doing some disaster surveillance, especially predictable disasters? Or even some of the unpredictable disasters, if we know why it happens, there can be some kind of surveillance, and the surveillance can help. So I'm just putting thoughts, putting ideas that we have to think further to bring it to action. Nothing is going to happen tomorrow, or even if you get money, you will not be able to do tomorrow. But we need to put our mind and interest into it. And all of you are here together today. And so I'm making this appeal to all of you because this is something which is very core to my heart. And I cannot do anything other than making appeal. And in whatever way I'm able to think, I'm passing it on to the people and to my friends and to my compatriots. So again, I'm making a submission to you all. Yes, Nupur, your presentation. So because Prishti is there and Animesh are there, I would like to make a couple of points here. आप लोगों ने जो फ्लोर से सजेशंस आए वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा है, क्योंकि आपने कुछ चीजें ऐसे बोली, खासतौर पे यहाँ से भी एक चीज है, आपने कहा कि कुछ IAGs के अलावा भी कुछ नेटवर्क्स होते हैं, लोगों के पीपल्स ग्रुप्स होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, तो हम कैसे उनको शामिल करें IAGs में, या फिर हम कैसे उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करें. At the same time, interagency group, Prishti, you just mentioned, they need to open up and they have to be inclusive. I don't think कि interagency group एक INGOs या donors का एक क्लब बन सकता है. मुझे लगता है अगर रिसोर्स ही या फिर क्योंकि कोई पैसा ज्यादा लेके आता है टेबल पे और हम उनकी ज्यादा सुनते हैं, तो हम वायलेट कर रहे हैं वो बेसिक प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे IAGs या कोई भी संगठन, कोई भी नेटवर्क बनता है, क्योंकि फिर हम सेल्फ इंटरेस्ट को ही सीख कर रहे हैं ना. एंड ऑफ द डे ओनली मनी मैटर्स, बट मनी फॉर व्हाट डू वी नीड मनी. तो हमने कहा रिसोर्स मोबिलाइजेशन की नीड है. तो इफ वी रियली हैव अ प्लान, अ सॉलिड प्लान एट द इंटर एजेंसी लेवल, और उसके बाद हम मैप करें कि एग्जैक्टली रिसोर्सेज किस चीज के लिए चाहिए, तो शायद एनुअली वो हमारे पास एक प्लान रहेगा कि हमें इन चीजों के लिए रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं. तो वी नीड टू हैव अ प्लान. आई वुड प्रपोज दैट वी have an exercise, if it's not already happening, कि इंटर एजेंसी लेवल पे हर साल का या 5 साल का एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान हो, और उसके बेसिस पे आइदर स्पीयर और कैसे अलग अलग सोर्सेज ऑफ मोबिलाइजेशन हो सकता है, उस पे साथ में काम किया जाए. और दूसरा, कल से ही मैंने ये पॉइंट्स को बार बार सुना है कि आपने भी पृष्टि जी कहा कि URS का एक मकसद ये था कि इट वाज फॉर डिजास्टर रिस्पांस एंड देन दे आर सपोज टू फेज आउट. उसके बाद में हमारा काम वहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि इमरजेंसी लाइफ सेविंग असिस्टेंस प्रोवाइड करा दिया है, गवर्नमेंट के असिस्टेंस को हमने और स्ट्रेंथन कर दिया है, कॉम्प्लीमेंट किया है. तो मुझे बिल्कुल वही लगता है कि हमें शायद हमारे प्रायोरिटीज को उस तरह से समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बारी हम क्या कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के काम को पूरी तरह से हाईजैक कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बीइंग फ्रॉम द डोमेन, बीइंग फ्रॉम द सेम सेक्टर, वर्किंग विद ऑल ऑफ यू, नेविगेटिंग डिफरेंट स्पेसेस, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एंड द मोस्ट ग्रासरूट्स, मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम बहुत चीजें अपने ऊपर इस तरह ले रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट नहीं डिलीवर कर सकती है. वी आर ओनली कॉम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट एफर्ट्स, लेकिन अभी हम हर जगह पे होना चाहते हैं जहां जहां हमें लग रहा है रिसोर्सेज की पॉसिबिलिटी है.
तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी डेंजरस फॉर द वर्क दैट वी आर हियर टू डू। तो मुझे आई ऑल्सो फील कि जो लीन पीरियड होता है ना, पीस टाइम जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे अगर हर आईएजी अपने स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में मेन एजेंडास को प्रायोरिटाइज करे कि जो आपको गवर्नमेंट के साथ में करना है। फॉर एग्जांपल संजय जी मेंशन किया ऑलरेडी सिस्टम में पंचायत लेवल पे भी इतने कमिटीज हैं, क्या वो एक्टिव है? हम नए कमिटीज फॉर्म करने की बात करते हैं क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट पैसा हमें वहीं से मिलेगा जहां हम सर्विस डिलीवरी दिखा सकते हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए पैसा कोई नहीं देगा, और उतना तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जितना हम रिस्पॉन्स में लगा सकते हैं। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हमें पैसा चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, लेकिन हमें सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, और सरकार के सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए वी नीड टू बी एजुकेटेड कि आपके पंचायत लेवल तक कितने कमिटीज हैं, क्या क्या सिस्टम्स है, कौन आपका रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है। सो हाउ डू वी स्ट्रेंथन एंड फंक्शनलाइज द डिफंक्ट कमिटीज एट द लोएस्ट लेवल्स, चाहे वो वार्ड लेवल तक भी हो, और हम ऊपर ऊपर ना तैरे, क्योंकि मुझे नहीं लगता एनी ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन in the way we have been functioning for years and years and years, and we plan to function for years again. If there is no change in our mind, अगर हमें नहीं लग रहा है, because all the resources जो हमारे पास आते हैं, we are only mere stewards of those resources. हमारे लिए नहीं है ये, and if we are not passing on these resources, वो चाहे पैसा हो या नॉलेज हो या हमारे नेटवर्क्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में हो या सरकार में हो, अगर हम कम्युनिटीज का कनेक्ट नहीं कर रहे हैं ना इन सबके साथ में, तो हम सेल्फिश हैं, हम अपना कोई एजेंडा नहीं अचीव कर पाएंगे। एंड ऑफ द डे वी नीड मनी, आई विल कीप सेइंग दैट, क्योंकि वो जरूरी है, पर आपके पास मुझे लगता है हमें सिस्टम के साथ में मिलकर गवर्नमेंट सिस्टम को और भी ज्यादा अकाउंटेबल करने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास सिस्टम्स नीचे तक है। वी कैन नॉट मैच के गवर्नमेंट कितना भी हम पैसा इकट्ठा ले आएंगे ना इधर, हम तभी भी स्टेट की कैपेसिटी मैच नहीं कर सकते, और वो हमारा दायित्व है भी नहीं। हमें वो करना है कि जहाँ स्टेट कमजोर है वहां हम उनको बताएं। स्पीयर में कौन सा है वो, अफेक्टेड अकाउंटेबिलिटी टू दी अफेक्टेड, वो एक प्रिंसिपल ही नहीं, एक कमेटी फॉर्म हुआ है। लेकिन आईएजीज के लेवल पर भी, क्योंकि हमारा इतना स्ट्रांग बॉडी है, आईएजीज में इतने सारे एक्टर्स हैं, तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लेके आए ताकि उनके मुद्दे भी उसमें हो। आपने पृष्टि जी कहा कि हम कब तक रिप्रेजेंट करते रहेंगे, और वैसे भी आईएनजीओज और एनजीओज और हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी स्फीयर में भी जितने भी हैं, हम बात करेंगे तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट की बात करेंगे, लेकिन जब कम्युनिटी आती है ना तो उनके हकीकत के मुद्दे आते हैं, तो कभी कभी उसमें बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए होता है, लेकिन स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। तो आई थिंक just how we are working with the government, we need to become the bridge between the government and the stakeholders. फिर आपके पास पैसा भी आएगा, हमारी इज्जत और ज्यादा बढ़ेगी, गवर्नमेंट रिकग्नाइज करेगी कि हम उन्हीं के सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, ना कि खुद के पैरेलल सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहे हैं, क्योंकि दैट विल गेट अस रिसोर्सेज। आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच आई कीप ब्रिंगिंग ऑल द टाइम, लेकिन वो हर बारी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिस्कशंस में खो जाता है। पर यू हैव टू ब्रिंग द ह्यूमन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन बैक टू द पिक्चर। लोगों के नाम पे मुझे नहीं लगता हम और कुछ साल इसमें इस तरह से चल पाएंगे जब तक कि लोगों की ताकत साथ ना हो। थैंक यू। Yeah. So we'll have time to take this discussion forward. So before we move from response to resilience, maybe I would like to invite Vikrant sir to summarize the action points from here. I think I'll not take time enough. जो समझ में आया कि जो SOP शेयर की गई है, अभी all of us have to become more familiar with it. अभी हम लोग familiar, काफी लोग यहाँ पे familiar नहीं थे उसको, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो मैं एक्शन पॉइंट सजेस्ट करता हूं कि यहाँ आज की मीटिंग से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लेट्स टेक 1 month or maybe 2 months. After 2 months we may be doing another workshop like this, so we can close the process in that. पर आप लोग इसको SOP को अपने अपने स्टेट में लेके जाइए, अपने अपने IAGs में कंसल्ट कीजिए। जो भी अभी तक चर्चाएं हुई हैं, बड़े अच्छे आइडियाज आए हैं इस डिस्कशन में, वो तभी मुमकिन है जब हम जमीन के स्तर से, समुदाय से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक, नेशनल को, तो एक सूत्र में बांध सकें। कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल्स और कोऑर्डिनेशन क्रॉस सेक्टर, उसका माध्यम है ये SOP। और ये SOP स्फीयर की नहीं है, ये SOP हम सबकी मिलके है, और वो हम सबकी मिले, इसके लिए आप अपने अपने स्टेट में जाके इसके ऊपर चर्चा कीजिए, अपने सुझाव लेके आइए। आई थिंक प्रोसेस हम वेबिनार के थ्रू भी फैसिलिटेट करेंगे। हर स्टेट में इसका ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और 2 महीने के बाद में हम जब इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे फरवरी में, कि और हम सब मिलके इस बार एग्री करते हैं कि ये SOP हमें प्रोसेस करनी है।
चैलेंज जो आता है बीच में, जो इसमें टाइमलाइन लिखी गई है, हमें उसको समझने की जरूरत भी है थोड़ा सा, क्योंकि आपदा इमरजेंसी की एसओपी है तो उसमें स्पीड की जरूरत होती है, गोल्डन टाइम में की, लाइफ सेविंग की या बेस्ट रिस्पॉन्स की अपॉर्चुनिटीज होती है, इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, इसीलिए हमें ये टाइमलाइन फॉलो करने की जरूरत है। तो अभी नहीं, आपके जो सुझाव आएंगे हम उसके हिसाब से ही एसओपी को फाइनलाइज करेंगे। तो आई थिंक ये एक एक्शन पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आइडियाज और सब बहुत सारे आए हैं, हम उसको लर्निंग टीम कंसोलिडेट कर ही रही है, उसको एक फाइनल रिपोर्ट में हम लेके आएंगे कि हाउ वी वांट टू एक्ट ऑन टू दैट। अगेन आप रिपोर्ट पे अपनी इनपुट दे सकते हैं, लेकिन इस सत्र की अगली डिस्कशन की तरफ जाते हैं। आई नो मुझे अनिरुद्ध कुछ शेयर करना चाह रहे थे, मृणाल भाई कुछ शेयर करना चाह रहे थे। जब ऐसे डिस्कशन होती है तो आइडियाज वार्म अप होते हैं, एवरीबॉडी वांट टू शेयर। आपको अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट डिस्कशन में मिलेगी, डेफिनेटली विल स्टार्ट विद अनिरुद्ध एंड मृणाल इन द नेक्स्ट डिस्कशन, ठीक है। तो अभी हमने जो सेशन प्लान किया था इसमें 3 डिस्कशन थी, एक हमने कंप्लीट की है, दूसरी थी अभी हमने यूनिफाइड रिस्पांस स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, अब हम स्टेज आ रही है डिस्कस कर रहे हैं यूनिफाइड रेजिलियंस स्ट्रेटजी की, राइट। और तीसरा था कि आईएजी और स्फीयर कैसे मिलके काम करेगा, उनका एमओयू का आईएजी, स्फीयर और एसडीएमए और मे भी अब तो डीडीएमए, हम सभी की बात कर रहे हैं नीचे से ऊपर तक। जो एमओयू है उसकी शेप क्या होनी है, ये तीसरी डिस्कशन करनी थी। तो क्योंकि इसमें हमने समय ज्यादा लिया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो दूसरी 2 डिस्कशन है कि रेजिलियंस कोऑर्डिनेशन कैसे होनी है और एमओयू की रूपरेखा क्या होनी है, उनको कंबाइन कर देते हैं अभी। अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया जा रहा है आपसे, नुपुर ब्रीफली आपको बताएगी कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है। आप इस अपनी ग्रुप वर्क की डिस्कशन को, पूरे डॉक्यूमेंट को में जाने की जगह पे उसके उद्देश्य को समझिए और उस पर चर्चा करके अपने पॉइंट्स लेके आए। आई थिंक दैट विल बी अ मोर वैल्यू इनपुट इस लिमिटेड टाइम में, क्योंकि मुझे पता है इतने लंबे डॉक्यूमेंट को इस टाइम में शायद समझना अभी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो समय आपका है हम उसमें आप कैसे कैसे अभी इनपुट ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेसेस अभी क्लोज नहीं होंगे, ये प्रोसेस अगले 2 महीने तक चलते रहेंगे। वी विल ट्राई टू कंसोलिडेट ऑल एवरीबॉडीज इनपुट एंड देन कम टू मॉडल्स with which we can work forward. So this is where I'll suggest the way forward now. So Nupur, over to you. Maybe quickly take through the resilience strategy का क्या concept है and also the model MOU. Yeah, thank you, Siljo. You come to the next slide. So past 1.5 okay, past 1.5 hours we've been discussing about response. Now moving from response to resilience. So while we have been working with a network approach for emergency coordination, now we are working on developing a resilience matrix or a DRR matrix that captures the priorities that were enunciated by the Sendai framework into a planning framework. So towards that, and this will be an ongoing process, and we are also planning to have a compendium of the DRR works and case studies done by our member and network organizations. And so towards that, we had developed a matrix to kind of capture the DRR or resilience interventions done by various organizations and IAGs. So it's a basic 5W matrix. So we have shared the basic components of this matrix. So it is formulated in form of a questionnaire where we are asking about who's the organization, what is the intervention they are doing specific to resilience, and where is it, and the duration of it, and who is it for. So it's a very basic resilience matrix we have also circulated within our network. So at this point, we are taking your inputs on this. I think one copy of each has been circulated on each table. And Varsha, if we have any extra, can we have one over here also? Okay, so maybe, right. So as a group work or to take the discussion forward, you can maybe reflect on it for a few minutes, and I'll also move to the next slide on where I'll be taking. Sure, sure. Right.
Taking all of the discussions from yesterday forward, in this particular session, we want to brainstorm on how we can have a tripartite MOU with Sphere India, IAGs, as well as SDMAs. So we had few slides on like what is IAG, but I think most of us are familiar with the framework, that what exactly is IOG, what are the IAG, what are the principles of IAG, and what IAGs do in emergencies as well as in normal times. So I'll not take much time on that. Now to take this discussion forward, we're talking about how Sphere India, state IAGs and district IAGs can work together with SDMAs to kind of for effective disaster response as well as resilience building. So towards that, we have some models like Kerala model, where it has been notified. District disaster management authority district IAGs have been notified by the state government, and they are fully functioning autonomous bodies operating in Kerala. So it is one very good example where the three actors, Sphere India, IAGs, and the KSDMA are working together and working well together. So taking that model forward, we've also working on proposing a similar kind of tripartite agreement in other states. So this is a sample of what could be the objectives and activities under this. So since we don't have a printout of this, maybe I'll keep flashing these slides. So you can refer to these slides and maybe have a discussion within your groups, and then we can take it for open discussion. So while this slide will have the key objectives and key activities under this MOU, I'll just flash the other slide, which kind of lists down the roles and responsibilities. So I'll keep flashing the first slide first, and you can let me know, and then I can move on to the next slide. I hope it's readable for everyone. No, actually, you need to share your inputs as to whether this is the right way we are moving forward with this is how we can capture the resilience interventions of the organizations, or how we can improve it. No, you don't have to fill it. डिस्कशन कीजिए कि कैसे ये बेहतर हो सकता है. जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो सकता है, और जरूरी नहीं है एमओयू भी ऐसे ही होना है. ब्रिंग आउट आइडियाज. आपकी सोच क्या है कि कैसे हमारा एमओयू बिटवीन ट्राइपार्टेड एमओयू बन सकते हैं, या कैसे स्फीयर और आईएजी आपस में इकट्ठे काम कर सकते हैं. ब्रिंग आइडियाज एंड थॉट्स ऑन टू इट. और रेजिलियंस कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकती है. जैसे यूआरएस की एसओपी है, मे बी टाइम इज नाउ देयर टू हैव सिमिलर एसओपी फॉर रेजिलियंस कोऑर्डिनेशन. पर वो कैसे होगा, उसके आइडियाज आपसे इनवाइटेड है बेसिकली. These are just reference documents. So maybe I think looking at a time which is available, we can have 15 minutes of group discussion on these ideas. And after that, I think let's take it as a discussion, open time, more time for open discussion. वो भी काफी, उसमें भी काफी अच्छे discussions आ रही हैं हमारे पास में. So 15 minutes for your focus discussion on these 2 points, कि कैसे स्फीयर इंडिया, IAG और SDMA साथ में काम कर सकते हैं. ओके, उसका क्या MOU का रूपरेखा क्या हो सकती है, और दूसरा कि रेजिलियंस कोऑर्डिनेशन के लिए हम कैसे कर सकते हैं यूआरएस एसओपी की तरह से.
I think it's time over for the discussion group work. Can we start with the sharing of ideas? May I request team to facilitate? Siljo, Nupur. Please settle down. We will quickly start having the sharing of ideas now. So maybe from the first table, this side, or whosoever is ready to start first. It's okay, anyone can start, no problem. आपने जो डिस्कस किया है वही शेयर करना है, इतना क्या सोचना क्या है? करिए, स्टार्ट करिए. Okay, please pay attention. नमस्कार. हम लोगों का जो ग्रुप था थोड़ा सा डिफरेंट था, तो अलग अलग तरीके से विचार हुए, क्योंकि एक लद्दाख से है, उनके यहाँ पे आईजी है ही नहीं, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ है नहीं तो कैसे वर्क करेंगे. दूसरे थे, उनका मेडिसिन का टाइम हो गया था, मगर उन्होंने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट दिया है. उन्होंने कहा कि ये जब प्रेजेंटेशन हो तो उसमें शामिल हो, और उससे हम लोग भी एग्रीड होते हैं. एमओयू की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो ये है कि आईजी ग्रुप के मेंबर्स को लेकर ही सबसे पहले क्लियरिटी है. अलग अलग स्टेट का, लाइक केरला है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है कि उनका आईजी और एसडीएमए के साथ में और स्पेयर इंडिया, मतलब एक प्रॉपर वे है, एक चैनल है और बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है. बट इन आवर स्टेट मध्य प्रदेश में की बात करें तो डिफरेंट है कि वहां पर आईजी और स्पेयर इंडिया का शायद बहुत अच्छा है, मगर एसडीएमए के साथ में उतना अच्छा कोलैबोरेशन नहीं है. ऐसे ही सर का अपना एक एक्सपीरियंस रहा है. तो कुल मिलाकर सबसे पहले तो ये विचार हो रहा है कि मेंबर्स के अंदर कौन होना चाहिए, क्योंकि अभी मेंबर्स में ग्रास रूट पर जो वॉलंटियर काम कर रहा है वो भी आईजी का ग्रुप मेंबर है, जो एनजीओ है वो भी मेंबर है, जो डोनर है वो भी मेंबर है, या कोई स्किल स्पेशली डिजास्टर में रखते हैं वो भी मेंबर है. तो ऐसे करके कैटेगरी जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक आईजी मेंबर्स के अंदर है. उससे कभी कभी कुछ डिस्प्यूटेड सिचुएशंस भी निकल के आता है इन अ प्लानिंग वे. प्लानिंग फेज के अंदर बहुत सारी चीजें होती है. तो सबसे पहले मेंबर्स को लेके क्लियरिटी हो. सेकेंडली जो स्पेयर इंडिया या जो भी ऊपर से आते हैं उनके लिए ये कि आईजी मेंबर का स्ट्रांगली ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हो, क्योंकि अभी केवल ऑनलाइन सेशंस होते हैं कभी कभार, और ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है, और उसमें ओनली इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है कि ये फॉर्मेट्स दिया है, इस फॉर्मेट्स को फिलअप करके और दीजिए ये फॉर्मेट का. नहीं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन सेंटर के रूप में आईजी ग्रुप अभी वर्क कर रहा है. तो उसमें ये कि कैपेसिटी बिल्डिंग और दूसरी तरह की चीजें भी शामिल हो, जो एमओयू के क्लॉज में भी हो, मेंबर्स को लेकर हो, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर हो. ये 2 पॉइंट्स डिस्कशंस में आए थे. उसके बाद में हमारी मेंबर और उसमें पॉइंट शामिल कर. थैंक यू. सो और एक पॉइंट था कि क्लैरिफिकेशन और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स एंड मेंबरशिप, क्योंकि काफी लोगों को इस बारे में पता नहीं है. और ये जो एक फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स दिया गया था, वो मैट्रिक्स पे भी हमने चर्चा की. उसमें जो पॉइंट्स है उसके बारे में सर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन में कुछ पॉइंट्स बताए थे. In fact, we have gone through this unified resilience strategy. When we talk about the resilience, we need not any resilience at upper level, IAG or IAG level or DDMA level or something, as far as my knowledge goes. The resilient communities, for instance, some villages are most vulnerable to many disasters, multiple disasters. So that is why the community has to get the community resilience. When we talk about the resilience,
there are three components. First of all, the community preparedness, disaster risk reduction, and disaster management. This disaster preparedness, in fact, the local community which is going to be affected by any disaster should have equipped with the managerial skills and preparedness skills and other things that we have to give some capacity building training events to the local community. That is one point. The second thing is risk reduction. What are the risks existing particularly in that village? So how to reduce the risks from the disasters? So that is the second point. And the management, when it comes to management, we have to establish close contacts with the DDMA, local bodies, and district IAG, and DDM, other departments. As and when disaster occurs, these people should be able to contact all the people to get assistance from different departments. So if the three components are established in the community, vulnerable community, then we will call it as a resilient community. So this is my knowledge. In fact, as far as I have been working on this disaster management for the past 35 years, and when we talk about the community resilience is very important, and the first responders are also the community, those who are going to be affected by the disaster. That is why the matrix format clearly says about the who, what, where, when, whom. These are the questions we have gone through it, but there is no community role and the community capacity is not there. So that is why I'm just making a point to submitting a point to you, sir. Thank you very much. Yes. Thank you so much. The point I was making is that I think, you see, when you're talking about a coordinated response, it's not only something that happens at the grassroots. It's important to have it at the grassroots, right? Can you hear me? I'm not sure if it's but say, for instance, like, a lot of NGOs are working. They, as you said, spatially we work it out. 20 villages here, 30 villages there. One organization looks into one area. But when you talk about the vertical problems, the multiple problems, someone needs to look into, say food, someone needs to look into health issues. What happens very often is that our donors, most of us work through donors now. It's whether it's a CSR or, institutional donating or donors or something like that. They often don't understand this. There's a gap in that as well. So that is also a function for Sphere. Better than people down, living in that. Well, yeah, we need to do that as well. But it's multiple, you see. When you're going from care, and if you don't have multiple components in it, right? At least 3 or 4 critical components, it's missed. They'll be dismissing it, right? But these are equally important, right? I thought that is also an aspect that needs to get into that entire spectrum of thinking that we are doing with regard to unified responses as well. It's dependent. It needs to enter the government's thinking as well. Because very often you see what are governments doing? Rice, dal, and maybe mustard oil or some oil, and it's finished out there. It can't be like that. I think there's a larger education work which also needs to happen. How we do it is something that we need to brainstorm on. And maybe other people have some. Just to add to this point, very simple initiative, Vikrant, where you look at the government sit reps, which comes after disaster, and if we try to influence the format of the sit rep to just to ensure that it includes all the critical components of humanitarian assistance. Just that one intervention would mean that if you have a comprehensive sit rep which is released by the government, that would mean that all the agencies, all the districts, they will have to kind of, report in that format. That would also mean that they will have to work on that format. So it might be a simple exercise for us to kind of, influence the format of the sit rep, but it might have an implication in terms of, the design of intervention in the last mile. So maybe we can also think that how innovatively we can, advocate and influence some of these aspects at various levels, and it gets reflected in the actions in the last mile.
हेलो, थैंक यू। हम दो तरह से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये जिसमें सब लोगों ने एग्री किया, आई थिंक एवरीबडी हैज एग्रीड दैट देयर शुड बी अ चेन ऑफ वैल्यू चेन ऑफ कमांड, वैल्यू चेन सिस्टम देयर शुड बी देयर। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि एक ओवरहेड टैंक है और किसी जगह जहां हमें कोई चीज लेके जानी है तो ओवरहेड टैंक में हम फिल करें और धीरे धीरे कहीं चेक वॉल्व्स होंगे और कहीं पे कुछ होगा। तो दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जिससे कि हम लास्ट माइल जहां भेजना चाहते हैं वहां जाए। अभी पहले बात हो रही थी कि हर लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस के बीच में। दीज आर ऑल इंस्टीट्यूशंस, छोटे बड़े कनेक्टिंग होंगे तो उनमें कैसे फ्लो करेगा इंफॉर्मेशन और उस टैंक में आइडिया कहां से आएगा वो भी एक नेशनल लेवल पर सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हर चीज के लिए आइडिया वहां से आए एंड दैट आइडिया इज पेनिट्रेटिंग अगेन स्लोली टू द लास्ट माइल। ग्राम पंचायत की बात करें या डिफरेंट हम वार्ड्स की बात करें जो आप कह रहे थे, तो कैसे वार्ड लेवल पर जाएगा, उसमें भी जो समितियां हैं उनकी उनमें कैसे जाएगा। जो प्रॉब्लम आती है ट्राइपार्टाइट की बात अभी इसमें लिखी हुई थी, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम गवर्नमेंट के साथ एमओयू करें और इफेक्टिव भी हो। अभी हम लोगों ने यूपी में एसडीएमए के साथ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का एमओयू कराया, यूनिवर्सिटी का कराया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का कराया और बहुत सारे। कहीं वो वीसी यूनिवर्सिटी का उस बात को तवज्जो देता है और कहीं नहीं देता है। कहीं उसमें जो खास एक व्यक्ति होता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी जब हम लोग एमओयू करते हैं तो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होता है जिसके थ्रू उस प्रोसेस को लीड करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट काम करता है और वो फिर अपने वीसी के साथ कनेक्टेड रखता है। एग्जैक्टली गवर्नमेंट सिस्टम में भी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे ग्राम पंचायत की बात करें या भी ब्लॉक पंचायत की बात करें, देयर शुड बी समबडी, some organization which is non-government need to be connected with that. तो हमारा एमओयू जो होगा मोस्टली उस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होगा। उनके फॉर्मल लिंकेज बनते हैं या इनफॉर्मल लिंकेज बनते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑफिसर। क्योंकि आज कोई ऑफिसर है एमओयू बनाता है और वो काम करता है, हो सकता है कि कल दूसरा आए कहे भाई ठीक है हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसको नहीं मानते, तो देन दैट organization is there which is communicating and slowly mobilizing. In due course time will come जब वो सारा का सारा effectively connect हो जाएगा, सारे threads will be connected. But आज की situation में ये कहना मुश्किल है कहीं MOU बनेगा और ट्राइपार्टाइट और कहीं नहीं बनेगा। तो जो चेन ऑफ कमांड हमारी होनी चाहिए, जो हमारे कहते हैं कि ओबीडियंट चेन ऑफ कमांड, वो हमारा सिविल सोसाइटी का कमांड होगा। वो गवर्नमेंट में कमांड कभी हमारा चलेगा नहीं। तो इसको भी हम दिमाग में रखें, आई थिंक, एंड दैट काइंड ऑफ एमओयू शुड बी इंक्लूडेड हियर। थैंक यू। आईएजी का डिसीजन होता है यूपी में ये करना है, उसके लिए गवर्नमेंट चिट्ठी लिखती है। आई मीन दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज देयर टुडे, दैट मे नॉट बी देयर टुमारो व्हेन वीसी इज चेंज्ड। तो मैं ये कह रहा हूं, और वो लेटर भी गवर्नमेंट का आदमी जो आईएएस ऑफिसर है वो चिट्ठी लिख करके करता है कि आईएजी ये करने जा रही है या हम ये कर रहे हैं और कॉपी टू आईएजी। बट आई मीन जो मैं बात कहना चाहता हूं कि हर जगह वो शायद वही बात अगर रिलीफ कमिश्नर के वहां हम लिखना चाहें तो शायद मुश्किल होगा थोड़ा सा समझाना उनको। दैट्स द इशू सर। Hello. We are trying to
bring in something that has happened at one place to another place. You know, as always in the development sector, we say that our 5 fingers are not same. Same thing in the society. हर country अलग है, हर state अलग है, हर district अलग है, हर गांव अलग है, हर पंचायत अलग है. तो इसलिए हम one size will not fit to everybody. So something that might be working in Kerala may not, in the same shape, may not work in Arunachal Pradesh. We have to think that what are those contextualization, adaptation kya hai? Same principle we can, like that's why I'm saying, going away from the word MOU, I'll say that instrument of engagement. What will be an instrument of engagement between the humanitarian organization and the state organization and the community organization, or how, what kind of instrument of engagement we should develop so that our purpose is met. In Kerala, you can call it MOU. In Manipur, you can call it MOU. You can say that it is tripartite, it is bipartite, or it is a group. You know, things will happen when you start discussing with the stakeholders. So, हम उसको कोई fix mind में मत जाइए. Let us go and discuss. First of all, हमारा आज इतने स्टेट से आए हैं, let them study the Kerala model. From Spears Secretariat, let this Kerala model be shared with everybody in detail. What is the evolution, how it happened and how it works, what are the challenges. Let some people from Kerala who are implementing this instrument of engagement, what are the issues, what are the challenges, where it works very well, where the problem arises, let them come and give some presentation and share some experiences. So then we'll be able to know that these are some of the beautiful things there in Kerala model, and we can adopt it. We can tweak it to suit our case. In Bihar, it can be tweaked in a manner. In Uttar Pradesh, it can be tweaked in this manner. So let us work in that process and come to a stage where we will be able to develop our own system. UP IAG will develop its own instrument of engagement for engaging with this government. Assam will make its own instrument of engagement to engage with the state of Assam, government of Assam. So let that IAG be autonomous to this. The idea, Spears Secretariat has only transmitted the idea of Kerala model to others. And for knowledge, you can hold a workshop to explain what is this Kerala model and all that. Is there any report, share it with others. This is the way we'll be able to go ahead and do something which is more acceptable. Because otherwise, if we bring that it is working in Kerala, why it will not work in Assam? Who are we to say that it will work in Assam? People in Assam only will tell whether it will work for them or not. By sitting in Delhi, we can't say that. And if we do start doing that, we are making a mistake. And I have a personal experience of this thing. That's why I'm a very severe critic of template. I always say that framework, template means you have no scope to think. Like someone mentioning here that we have been, our job has become that you are giving a format and you have to fill the information. Is it our work only? I think someone made this statement. So this is definitely, there is a feeling that we are not engaged. We have been asked to do. How we create an environment that we get engaged in the source process so that we will own this process. What is IAG and what is Spear? I am looking at Spear and IAG as the same. Spear is a coalition, IAG is a coalition. So that is the way we have to bring that kind of organic relationship. We'll talk more. Let everybody see. So regarding the disaster, the DRR matrix, I think if there is, we can add impact. That will be a possible. And the second thing, it's not related with the DRR, and I think the disaster management should be part of academic also. See, as we are thinking that
disasters not only for NGO as well as IAGs. This is for common public. Now we are focusing on panchayat level capacity building, but we also should concentrate on the next generation. So they should know at least something about the disaster management, so that at least it will be easy to for us also. As an NGO, when I'm trying to train volunteers, particularly for MSW volunteers, they also, it's little difficult to handle, so little difficult to understand. So something as a preliminary they should they should learn. So I think we have to give some attention so that it will be part of our academic also. And the second thing regarding the resource, we have focused that some emergency materials like as from our Tamil Nadu, I think it's like tarpaulin, blankets, etc. What happened now when local NGO, they may need few numbers, 10 or 50, they may got it for 1,500 rupees for a tarpaulin. But when I am getting it for 1,000 numbers, I am able to get it in for 800 rupees, the same material. But what we do is, we will tie up with the vendor and we mention them. See, if another NGO came for whether he purchased for 10 or 20, whatever it is, you have to give them same rate what we are getting. So if possible, Sphere can do something like that in a national level, particularly from some resource materials, emergency materials, so that it can tie up with the vendor and mention that whatever the numbers may be, but this should be the rate or this is the quality assured. So that as a IAG, as a NGO, what we get something the common numbers and the values, particularly during the disasters, the numbers, the values are keep on increasing. So we can handle something like that. Thank you. हाँ, गुड मॉर्निंग। हमारे टीम से ज्यादातर जो फॉर्मेट जो दिया गया था उस पर वी रिव्यूड इट, और हम लोगों की समझ से जो आई वो 2-3 बात उभर के आई डिस्कशन में। एक तो एक ट्राइपेटाइट अग्रीमेंट की बात है, क्या स्फेयर इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ अकाउंटेबल होगा तो कैसे होगा, वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे, एक मुद्दे पे वो बात हुई। क्योंकि बाइपेटाइट में भी हम लोग वो चीज कर सकते हैं, वो उनको एक्सेस कर सकते हैं स्टेट लेवल में। और जो TOR हम लोग उसको एक फ्रेमवर्क के रूप में ही देख रहे थे, जो एक्टिविटी है और कैसे है, क्योंकि हर स्टेट यूनिक है और डिमांड भी अलग अलग तरह से है और गवर्नमेंट की अप्रोच भी अलग अलग तरह से डिजास्टर को मीट करने की है। कहीं DC का एम्पावर्ड है, कहीं तो उस हिसाब से हम लोगों के ग्रुप में हुआ कि हम लोगों का स्टेट एक तो समझ सकता है, जैसे बहुत अच्छा कहा कि केरला मॉडल को भी रिव्यू इट कैसे हो सकता है, और वो इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है। डिस्ट्रिक्ट कहीं भी PIP भी बनती है तो लोग बोलते हैं केरला का क्या है, तो सिमिलरली इफ वी हैव अ कंपेंडियम ऑफ दोज फॉर्मेट, कहाँ कैसा काम कर रहा है, कि दे आर हैविंग देयर ओन लेवल ऑफ गेटिंग फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑल्सो। तो वो हम लोग कंपेंडियम अगर बन जाए 2-3 ही का हो तो वी स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दैट। और एक्टिविटी है और स्फेयर इंडिया का भी रोल उभर के आ जाएगा कि क्या वो रिसोर्स मोबिलाइज करके देंगे, फिर स्टेट उसको कैसे करें। दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। स्टेट में ही काफी रिसोर्स आदमी जनरेट कर सकता है, क्यों एजेंसीज भी कर सकते हैं। आई थिंक इसको TOR के रूप में हम देख रहे हैं, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा, और फ्रेमवर्क के रूप में अगर हम लोगों को क्या कोई ऐसा स्फेयर इंडिया क्या ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट SDMA NDMA के साथ किया है क्या? इफ अगर वैसा नहीं किया तो अगेन वी हैव टू थिंक दैट वे आल्सो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम स्टेट में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि एट द नेशनल लेवल SDMA और स्फेयर इंडिया क्या है, तो सिमिलरली हम लोग डाउन द लाइन वी कैन इन्फ्लुएंस दैट। मतलब ये डिस्कशन हमारे टीम के साथ हुई। थैंक यू। Good morning, everyone. Our team is consisting 5 members, Assam and Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. We are discussed regarding this MOU copy. So our group is expressed the idea to focus in elaborating in detail, but is a small one. Another one, and they are not mentioned the three parties role and responsible. So included that one. That is also key focus area
response mechanism also important to include the MOU. And regarding duration, we are already, you are already mentioned September to December. This is very difficult to implement within the 3 months. Another 7 days or 5 days is there. It may be January to March. The duration is better. My group opinion. And another one, activity also very good. 1 to 5 activities you are mentioning, that is also implementing. But within the 3 months, the 3 workshops, state level, cluster level, and district level workshop is there, and also coordination activities also is there. So that is the time frame. Maybe increase the time frame more than 3 months. That is also better than my group opening. So thank you, sir. Thank you. So good morning, everybody. I stand on behalf of IAG Manipur. From my experience, I have found in the name of IAG, I went all around for the government level or public level, and they all accepted and they have given their recommendation. So what I want to say is that if we go forward any level, they accept us, they receive us. And secondly, what I want to say is that IAG in any state should work as coordinating or unifying factor. And IAG can make a major role in the state if we function well. As Lee said, it is not that Spear India comes and does everything, but it is those who are in the ground, in the grassroots level. If we are united in the state, we can do great things. That is to say, like a state like Manipur, we have very remote places, interior places where vehicles cannot reach, where there is no network and so on. When some disaster happens in that interior places, we should coordinate or work together with the government departments. We should work with all other sectors, like we need sometimes security persons. We need sometimes road making the team, like a GREF, or we need a health commission. We need the help of all these people. Therefore, it is a IAG, if they work together unitedly and coordinate in the state, and we can do great things in the name of IAG without that is Spear India helping directly from here. And thirdly, we had several rounds of meeting for framing this MOU. We had the meeting with the Spear India, and we had the meeting with the Spear India and the state disaster management authority and so on. Whenever we met the director or assistant director, they were all receptive, but they did not know what is the mode of the reality of this MOU, what we are framing. Finally, when we went and met the director, he said, you please submit the draft copy and submit. And accordingly, we have submitted the copy, and they will study about it, and they will see, they will give their feedback, the evaluation. And that is to say that they are also accepting this drafted copy, more or less. Of course, MOU is not signed, but we are in the process of making this MOU. And I think it will work it out. And that is the way we are going about with regarding this MOU. And also I want to say that we can work, we can do great things if we are united, if we work as a coordinating factor or unifying factor in the state, wherever we are. Thank you. Just we had some discussions, and it's just loud thinking, nothing very practical. We have been all asking for support from Sphere India.
We means the IAGs in India. That's because Sphere India has a model of raising funds. I think that model should be, that training should be provided to the IAGs also, how to raise funds. And to make the association more stronger and the bond more deeper, I think some sort of fund management, like 5% of what the IAGs raise, should also be given to Sphere India to make the whole thing both way moving. That is just out of just think we are thinking about it. Maybe we can think about it later on. So I have only one input, probably for Vikrant, Sphere India. We were talking about unified resilience strategy, and I believe that when we are talking about resilience strategy, probably we might not have the right stakeholders here in this hall. Just to give you an example, say if you are talking about water, when it comes to humanitarian response, WASH is an important element related to water. But when we talk about resilience, water governance becomes a more important issue. And probably stakeholders who are more on the development side of the overall spectrum, those stakeholders might not be here in this hall, or probably with whom we conventionally engage as a humanitarian actor. So if we are talking about implementing unified resilience strategy here in country, first step which we should do is to kind of do a stakeholder mapping and see that which are the relevant stakeholders who are not currently in our connections. Maybe some of the development actors, planners, architectures, and some government line departments with whom we do not conventionally engage, and then see that how we can proceed on this. Yeah. So let me try to reflect on the input that came from the audience. So there are two pieces. One is, since two sessions are combined, one is on unified resilience strategy, the other is on relationship, MOU kind of thing. On the resilience strategy, my clear view is that, as in fact, to great extent, I'll echo on Nimesh, that when you talk about resilience, we have to really get engaged with a different set of stakeholders. And unified resilience strategy, unified response strategy, the name URS will conflict with each other. Although both are complementary, so if we start promoting unified resilience strategy, then unified response strategy, which is on its way to get matured, will get killed. So my submission, therefore, would be, my view would be that let URS be known as unified response strategy. There are a lot of things we have to do in a unified response strategy, fine-tuning and taking it to the action level and all that. And on the resilience front, we have got this resilience plan, resilience concept and all that. That's is a much greater framework that the country is talking, and let us talk also. Let us talk with the relevant stakeholders, bring them and get an alignment with the development actors on that sector and the humanitarian piece into that. So that should be happen. So that's my clear view on that. On the second MOU, my view would be that let's talk first about creating an instrument of engagement between Sphere India, which is a national coalition, and IAG, which is a state coalition. IAG is the face of Sphere at the state, but it is an autonomous entity. So therefore, there should be an instrument of engagement. So let us talk about that relationship between the state level humanitarian coalition and the national level humanitarian coalition. That should be our purpose, so that we become really compatible with each other. To do that, we have to be very clear that
what structure whom we are representing at this state. When we talk about IAG in particular state, whom we are representing? Are we a coalition or are we a club? So if we are a club, obviously we are not representing all. So let us try to bring as much possible in an inclusive manner and be a representative of the humanitarian actors in the state, so that we have got legitimacy to create an instrument of engagement with the National Humanitarian Coalition. This is number one. Number two, Sphere India by its constitution is not a fund mobilizer. So Sphere India, it's a NGO of NGOs. So therefore it cannot raise funds and cannot fund its members. So therefore, but it raises fund for its activities. All the activities that are happening today, you are seeing, we have created an academy, we are having this discussion, we are having this JRNA, we are having this various research studies and all that. For that, we need money, and Sphere India Secretariat is raising funds. So your Sanjay, your point of your suggestion of Sphere India Secretariat giving the training, how IAG can raise resources for their own activities, that they can probably a couple of workshops and methodologies and some lead that can be provided. That's a very good suggestion. And on the third is that tripartite, please let's not push it. And let the Kerala model be researched, documented and shared, and a consultation, maybe a virtual workshop roundtable can happen, and everybody understand what is this Kerala model and how it is working. And then we start thinking that how that model can be customized to my state. And if they are interested, like in Manipur, the director said that what you are talking, you give it in writing, we'll see. If we have got a analysis, research, document, and we'll say that this, and we'll come and give you a presentation, or this is the PowerPoint presentation, see that how in Kerala it is working in the best interest of the stakeholders, both government and non-government stakeholder and the community. So that impression, that convincing will be possible. So by just talking to getting a tripartite and all that, it will not happen. And if at all there should be instrument of engagement, this should be ordinarily, it should be with the state coalition and the state government. And at best, the national coalition can be a facilitator, can be a moderator and all that. If the government is saying that the national coalition should come as a moderator and be a party to the agreement, why not? If like Kerala government requested Sphere National Coalition to come and be a party to the agreement, the Manipur government tells, then no objection. The Bihar may not tell, Assam may not ask, Uttar Pradesh may not agree. You know, so let us not impose. Let's keep it open. Our primary aim is to create an instrument of engagement between us, national coalition and state coalition. And then let us think about district coalition. Couple of district coalition, district IAG have been started and it is working. Somewhere it is working, somewhere it is not working. So let us talk. Like at a national level, when we conceptualize this national coalition, we thought about the state coalition. So similarly, you state coalition start thinking that these are my disaster hotspot districts. How do we create a coalition in this district? Not necessarily all the district. Don't impose the coalition model to all the district, because the situation, the local context in district to district will differ. So look at only the hotspot, disaster hotspot districts and work towards a coalition building in the district. Then you will be able to get your pathway appropriate from state, you'll go to the district, and then you'll be able to approach that how we create engagement with Panchayat. Start dialogue with the Panchayat Raj department in the state. And in fact, I'll urge that Sphere also to start dialoguing with the Panchayat Raj Ministry in the government of India. Because that's where we'll be able to make the difference. Impact will come from there. Because now our institutional structure has become very robust. NDMA is there, NIDM is there, task forces are there, they're doing a lot of things. So trying to do tinkering, we'll be only tweaking. We'll be able to create huge impact if we toss the cutting edge, that is the Panchayat. So this will be my reflection after listening to all your
reactions. Thank you so much, sir. Yeah, I think we're coming towards the end of this session also. I just quickly summarize some of the forward actions. So as shared, these were just the samples and ideas which are evolving, which need to have a more thinking and brainstorming. Again, it cannot be done in this small session. We need to have a more process time for this. And like the previous discussion, let's take 2 months. I'm quite sure that after 2 months, we are likely to have a similar workshop again, right? Whether we are able to have people coming traveling for it, or we will connect digitally, but definitely we will make an effort for having people travel and coming again. And I'll request same people travel again, if possible. So the quantity of thought is there. And in between, take up these discussions to your groups. Please have a rich discussion in your states, so that the next time when we come more informed as a more, inputs from your local level groups here, and we can take decisions together that how we have to see the year 2023 ahead. So that's one forward action. So on the unified resilience strategy, I think maybe Prusji is suggesting, maybe let's not call it URS. We see what we call it. But as for the engagement of development actors, I think in Sphere, it has already started a lot. For each of the sector group, wash, shelter, food, nutrition, it has gone beyond sector committee now of humanitarian members. It is engaging, all kind of actors, networks. Each one of them is becoming a network in itself. So that's a network. A network is evolving within Sphere. And it is no more remain an NGO group. That's more important also is there are increased participation of corporates, private sector. There are very increased participation of media groups in this discussion. Academia is very heavily represented now. So the all kind of actors group have started being engaged also in this process. So that's something how Sphere is changing. But this also character need to be become what IAGs perhaps need to think about, that how they need to do. Because IAG again have to change its outlook in time to come of becoming an NGO group or an NGO club in some places as is being called, to a stakeholder representative group and true character of intelligence group. I think that's again the roadway to take. So that's why I want to share animation on your work, but it's a work in progress. I think what your suggestion is right in the spirit, but it's a work in progress. We're a humanitarian coalition. And therefore, all types of humanitarian actors are eligible to be a part of this coalition. If there are knowledge institutions in the state, bring them onto your coalition. There are thought leaders, bring them into your coalition. You'll become rich. But also there's a global now priorities in terms of what is coming as something called a nexus approach. It's no more, we are working in the silos of humanitarian, this is humanitarian and response only. This is DRR, this is, so they call a nexus approach. Nexus is bringing humanitarian, DRR, climate change, peace and development actors together as one. And that's where I think we are all progressing towards. And that's what also I think IAGs need to do. And what IAG needs support for that from Sphere, we're happy to look at discussion, bilaterally with each IAG or as a group with IAGs together. I think that's a road, which is coming up from the priorities which are ahead. Second part of it is the discussion is more in terms of this MOU, instrument of engagement. Yes, again, I think next 2 months, the process, let us have at least a clear, instrument of engagement, MOU as Sphere and IAGs together, right? And we remain open to thoughts and ideas like what Sanjay is suggesting and others are suggesting. It not necessarily have to be the IAGs, maybe because for all others, they're looking at membership fee to Sphere, but it not necessarily have to be the way which Sanjay you are suggesting. But let's look at the open ideas, what could be there. I also know that Sphere at some stage, like Prusji, there are no consensus about getting Sphere registered, isn't it? So we have traveled a long process of discussions and reaching it to that stage. It took 5 years. I think that was my initial engagement with Sphere to come to this decision to reach that. But with time, the decision was taken. The same way, I think with time, current time, the network maturity, the maturity of all the structures which we have evolved has increased over a period of time.
And I think it's okay to look at the new areas and the new spaces where we all need to be working together to generate a larger value. So there's always a scope for that. And those ideas, we bring it back in our next discussion in February. And we see that, how we take the collective journey ahead. And in between that, there has been requests like from the Northeast, right, Minal Bhai? So they wanted that, we support also a regional discussion between Northeast and IAGs, right? So that has been in principle agreed. And I think it was supposed to happen before this meeting, but maybe we will do it in between the, when we come for the national one. And if possible, I will make a urge and request to all the members of Sphere and all the supporters, if possible, let's do a regional, kind of a coordination meeting between the regional IAGs before the next national one happens, so that we have a more rich discussion coming from the region also. So I think these are some of the forward action points. And I'll end it here, and I'll put a word of thanks to all of you. I think there have been very, very engaging and rich inputs. My thanks to Prushti. Thanks, Animesh, for moderating it. And we have 10 minutes in between for you people to catch up for your tea before we start with the next plenary discussion. Thank you, everybody.
ഹായ് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആണോ? Getting something like that. Okay, in interest of time, may I request everyone to settle down and may I request everyone, please settle down. We're starting with the next plenary discussion. I'll request the Sphere India team members to please help facilitate. Let's start with the next session. Please help everybody get in back and settle down. The next discussion is about, we have discussed for last 1.5 days, you know, our collective journey, what are challenges we are facing, where the important learning, and also we have crafted, you know, a forward action for next 2 months. A very important part of all this, behind all this thing is how we put in the process of partnerships and collaborations. And there are some very interesting initiatives happening in India and beyond, you know, I'm sure it's happening at the very, very local level at where you are working. It's happening at nationally, some cross-sectoral partnership collaborations are happening. So next discussion is going to be a plenary discussion, which will focus on this. And it will be moderated by Devdita from Save the Children. She also represents on the executive committee of Sphere India. So over to you, Devdita. For this panel on collaboration and partnerships, may I request Mr. A.N.M. Prusti, Dr. Bhanu, Sapna from Delhi, Mr. Anindit Roy Chaudhary to grace the panel. I would also request Mr. Vikrant Mahajan to be a part of this panel as well. और जैसे ली ने कहा था ना कल सुबह की, हम लोग जो लोग यहाँ पे उपस्थित है, हम लोग हिंदी में कुछ लोग कंफर्टेबल ज्यादा है, हम लोग कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल ज्यादा है. तो जो कि हमारे साथ सपना है जो दिल्ली से बिलोंग करती है और हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों लैंग्वेज में, दोनों भाषा में बात करने की, ताकि हम सभी कंफर्टेबल हो और इसमें हमारे योगदान रहे सबकी. Set the context. हम लोग आज जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कल से हम लोग बहुत सारे विषय पे चर्चा कर रहे हैं. उनमें एक चीज जो बार बार उभर के आ रही है वो है पार्टनरशिप की बात, कोलैबोरेशन की बात, एकजुट होकर काम करने की बात, एंड हाउ वी कैन टेक दिस मोमेंटम फॉरवर्ड.
when the COVID-19 pandemic was here in March 2020, हम लोग का लॉकडाउन जब हुआ था, it created an unprecedented amount of panic in the beginning. पहले तो हम लोग बहुत पैनिक्ड हो गए थे कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. And then there were so many issues that came forward. Reverse migration का issue था. हम लोग जो घर में लॉकडाउन में बैठे हुए थे, हम लोग अपना खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, बुजुर्ग लोग थे, बीमार लोग थे, हॉस्पिटल में जगह मिलने की बात थी, दवाई थी, मेडिकल सप्लाईज. There were so many things that came forward. Then उसके बाद धीरे धीरे ये भी उभर के आ रहा था कि सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में कैसे उसका इफेक्ट हो रहा था. ये we all agreed on one thing. This is not a health crisis anymore. This became a socio economic crisis. जितने भी हमारे डेवलपमेंट के प्रोग्रेस हुए थे, SDGs के ऊपर आप बोलिए, टारगेट ने हम लोगों ने जो सेट किया था बहुत एम्बिशियसली सेट किया था और उसमें हम लोग प्रोग्रेस भी कर रहे थे. लेकिन वो प्रोग्रेस हम लोगों ने देखा हम लोग बहुत साल पीछे हो गए, because there was so much negative effect of the pandemic on our economic different sectors, not only the economic sector, not only the health sector, but also different sectors. तो वहां पे लेकिन इतना सारा जो हम लोग रिग्रेसिव जो इफेक्ट देखे, जो हम लोग ने नेगेटिव इफेक्ट देखे, उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव भी निकल के आया. एक चीज हम सबको आई थिंक समझ में आया कि once we started working together, हम अपने जितने भी स्ट्रेंथ्स है, यूनिक जो स्ट्रेंथ्स है हर किसी के, वो आप गवर्नमेंट की बोलिए, आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की बोलिए, आप मीडिया की बोलिए, कम्युनिटी में अगर आप देखें तो बच्चे की, युवाओं की, उनके परिवारों की, जब हम लोग जब इकट्ठा होकर काम करना शुरू करें, तभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इनोवेशंस भी उठ के आया है, बहुत सारे स्टेप्स भी हम लोग आगे बढ़ सके हैं एक साथ मिलके. So today, this session is more of a tribute to collective action, partnership, collective ownership, collective outcomes that we can look forward to, and also collective accountability in a sense. So उसी हिसाब से अगर हम लोग का पैनल में अगर आप देखें, हमारे साथ पृष्टि जी है, हमारे साथ डॉक्टर भानु है, विक्रांत है, अनिंदित रायचौधरी है from and Sapna hai. We have tried to have a diverse panel, and we will also try to ensure that there is a bit of open interaction possible, so that people who would like to come forward with their views and thoughts and reflections and how we can take this ethos forward, uske liye bhi hum log time rakh sake. तो इसके लिए before we start, I would like to very humbly request all of you, the honored panelists, and also the members here in this room, कि हम लोग अब थोड़ा टाइम के हिसाब से हम लोग चलने की कोशिश करेंगे. We will keep small slots for each of us so that more people can speak up and more people can share their reflections. So मैं हमारे साथ पृष्टि जी है, तो पृष्टि जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं विक्रांत को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अगर पृष्टि जी का इंट्रोडक्शन थोड़ा यहाँ पे दे. And then we will keep 7 minutes for each of the speakers, and उसके बाद open house में हम लोग at least 2 minutes करके हर speaker के लिए रखना चाहेंगे. So I have to request you to be a little. I think it's a tough job for me to introduce Prushti ji, or it's a easy way कि everybody knows Prushti ji, so I really don't really have to introduce. So Prushti ji, in a one line, I say the grand old man or the Bhishma Pitama now of all the work we are doing. They are founding chairperson of Spare India. His work across government and the civil society organizations, networks. I think he is on the board of more than 10 organizations now. I think probably he is the thought behind all the intelligence groups and the process we are doing is fair. So I'll fall short of words. So that was my difficulty part. Thank you so much for opportunity. Thanks, Vikrant, for this support. And Prushti ji, हम लोग सोच रहे हैं कि you are a thought leader in almost all senses of the word in this sector. And हम लोगों ने देखा there is this ethos of partnership and cooperation that came out of working together for so many organizations. Networks बोलिए, collectives बोलिए, government बोलिए, community बोलिए, CSOs, media. So
in your view, अगर आप थोड़ा reflect करेंगे कि what are those key lessons that we learn from this experience, how we can take this idea of collective action forward, how we can maintain this momentum and build on this further. If you see a multi-stakeholder or multi-sectoral, अगर हम लोग देखें, तो how do we build this partnership further? How do we take this momentum forward? Over to you, Prishti ji. You have 7 minutes. Thank you. I asked Vikrant to save that 2 minutes by not introducing, so that it could have added to my slot of 7 minutes. Okay, I'll to address the topic. I think it will be better if I go back to a bit of history and make some anecdotal statements. Spear for me was an accident. You know that many of you would have read also, and you can go to internet and read what this spear animal looks like. Sorry for calling it an animal, but because animal has got many dimensions, so that's why I use this. This spear, it is born out of a crisis. In 1994, there is a crisis in Rwanda, and nearly 1 million people died in 100 days. In 100 days of civil war, killed 800,000, precisely 800,000 people. And then few humanitarian organizations came together to reflect, like today we are reflecting. They came to reflect that what went wrong. We were there, we couldn't do anything, and 1 million people perished. And one of those few humanitarian organizations was one of my alma mater, CARE. And those days I was not working in CARE. Soon after that, I joined CARE. And then by accident, when this group of international humanitarian organizations were talking about Rwanda crisis and all that, they conceived the idea of coming to designing a protocol called SPEAR, developing a SPEAR standards, where there would be a collective action, there would be much more focus on quality and accountability and responding to the humanitarian principles and all that they were discussing. And they thought of coming out with a handbook, SPEAR handbook. So in 97, again by accident, I was nominated to be a part of that thought process. By that time, they have already come out with their first handbook or second handbook. I was, when I joined the group, we started rewriting the SPEAR standard. And they inducted me because of my experience in the food aid. And my food aid experience started with my learning from my grandmother in the village, that how humanitarian aid is done in a crisis. I'm talking about a drought situation that happened, that influenced my thinking. As a 10-year-old boy, I understood that what is to be done, how it's to be given and all that my grandparents used to do that. So when I went to that discussion in Geneva, I found that there are some 6 or 7 organizations discussing about the global crisis and approach to bring accountability, transparency to the humanitarian action. My first reaction was that you have produced 2. That's my phone. Off kar dena. Oh, side pocket. So I said, only a handful of you are here,
and you have designed a protocol, and you have designed one protocol, you have come out with probably the second edition. I am not very clear whether the second edition was there out, not. And I come from a country where all kinds of humanitarian crisis takes place. And all of you are here sitting in Geneva, you have field office in that country. And you are talking about global standards for accountability and quality and all that. I didn't find that in those country offices. Look at the irony that we are talking at a global level and it is not known at the local level. Then I said, this is first observation. Then this was received very seriously. And then at Geneva, it was decided that to take this knowledge to the field, we'll have country pilots. And India became a country pilot. And that out of that India country pilot, this Spear coalition is born. The Spear India. So when this country pilot, then the discussion came to India that how we'll do this. The idea is good that the standards will come to India, come to the local level. But how these humanitarian actors can play together. Then we discussed here and people started debating that how can you work together? We have got different agenda, different expertise and different fund base, different donors, and we are from different countries. How an American can work with the French guy, how a British organization can work in Norwegian institution, all kinds of this. Then in that discussion, like this, there was a discussion. We said that we are working on one agenda, that is action for a humanitarian crisis. We are not working on a multiple agenda. Our single agenda is humanitarian crisis, managing humanitarian crisis. And with single agenda, it is your agenda. You also work in humanitarian crisis. I work in humanitarian, like all of us work. So let us come around that single point agenda of responding to humanitarian crisis, managing a humanitarian crisis, preventing a humanitarian crisis, all that aspects. So they said, yes, the idea is good, but how will come together? Then we said that we will come to a coalition model. That how this coalition model, it took 3 years, I think 3 to 4 years, it took to get a consensus on that, how this coalition model, how this organization can come together, and how what will be the democratic process of governance, what will be the constitution, what are the do's and don'ts for this coalition, all this came. And I'm happy to see that we are together, so many organizations today. Another important thing happened in that discussion, that I said, we all are here. If we put all our resources together in a humanitarian crisis, at that time there are 2 humanitarian crises that happened, Odisha super cyclone and Gujarat earthquake. That all our resources put together will be less than 10% of the resource that what government is deploying. So in that sense, I have no hesitation to say that government is the biggest humanitarian actor in India. I don't know about other countries, in India. Then they said, yes, that is true, but it's not easy to work with the government. I say it is not easy to work with the government, but it's necessary to work with the government. We may not like, but if we work with the government, we will be able to share what we believe is good, and they will be able to see what good thing we are doing. And we will also see that if those good things get transplanted in the government work, the work becomes more beautiful, much better. So therefore, it is working together, and that is the time when government became a part of this humanitarian coalition. I'll not go into the other aspects of that. While this discussion was going on, this another dimension, another thing that happened in my life. About 25 years ago, I decided to go back to the university to study.
And that time I decided that I'll study international business. So in that international business, my thesis, master's thesis was globalization. And in that globalization, when I was doing research work and all that, I found I got confronted several times that if in true sense globalization has to be achieved, you cannot ignore localization. Globalization and localizations are the two sides of the same coin. The knowledge practice comes from localization, and you extrapolate it, you customize it, you take it to a policy, to a theoretic, you theorize it to in the interest of the global community. So therefore, in the humanitarian setting, I'll say that without localization, our humanitarian advocacy will remain incomplete. And today, this morning, all that we discussed were the aspects of localization. We talked about districtized, statized, districtized, working with panchayat. All these are localization. And for every steps of localization, you need catalyst. What a humanitarian organization and humanitarian professionals are nothing but catalysts. They will catalyze, they will generate these reactions, that humanitarian action will come out of their catalytic activities. So those NGOs or humanitarian organizations, we must be ready, we must equip ourselves to play the role of a catalyst in our location. And as a result, the humanitarian accountability will become profound and will become much better. And that's the way we'll bring. Now, government and humanitarian organizations. Now, another interesting that happened with this CSR Act getting passed in India. In fact, I was fortunate to get involved in this CSR policy making before the CSR Act was enacted. That was for CSR for PSUs. In fact, the first rough draft of CSR for PSUs was done by me, and which was subsequently further reworked, modified and all that. And then the CSR policy for the PSUs came, and then CSR Act came and all that. Now, CSR has become one of the very big prominent player in this. And the modalities also allow us the humanitarian action to be a part of the CSR. So we find that now the relationship is not remained in two, government and non-government organization. It is government, non-government and business organization. So this is today the humanitarian action has become the DNA, is becoming DNA of corporates. I work with few corporates, and I was surprised that the corporates at the MNC at a global level, they have decided that they are this development sector work, humanitarian sector work will become an integral part of our brand, of their DNA. Every individual, every manager, every CEO, every company lead, all will be inducted into this system. So the CSR is also becoming, that local CSR, Indian CSR is becoming global. So therefore, we have a tremendous opportunity right now to think together, government, non-government, and business organization. That I call tri-sector principle, tri-sector partnership principles. And how we nurture it. And Spear is giving a very interesting example. Today, we have got corporate social responsibility foundation representatives in our board. In fact, we should invite them to become our member also. They pay our membership fees of whatever, 10,000, 5,000, 1,000 rupees, and they become our member. Like this, we'll have an inclusive humanitarian platform. That is my submission. And that I had thought last night when Hannah told me that I should come here for this morning ISC session. So I was thinking that probably I'll be able to get a space to share my observations about this the coalition building and tri-sector partnership. And I urge and I beg, I appeal that if we are put our might, we'll be able to create a very sustainable, robust tri-sector platform in this country and help
the community at stress. Thank you. Thank you, Prishti Saab. And I think this is a wonderful idea that, and we add our voice to what he said, that we do beg, plead, and request your support for building this coalition, not only in words, not only in the theory, not only in what is a prospect for us as a member organization or an individual member, but also in the spirit of, in the true spirit of coalition building, in the true spirit of partnership, how we can each come together, contribute, and work together for the common agenda, the one humanitarian agenda. And with that, may I request Dr. Bhanu. Dr. Bhanu is a medical doctor. He specializes in tropical medicine. He is also a member of the State Advisory Committee of the Uttar Pradesh State Disaster Management Authority. He is right now chairing the UPIAG. In fact, all the time that I have known Dr. Bhanu, he has been the chairperson of UPIAG. He has been one of the very first members of the Sphere Collective, and yes, that is also true. And he has also been a thought leader in his own right in this whole collaboration, coalition building, and partnership process. So I would request Dr. Bhanu that Dr. Bhanu, a multi-stakeholder and multi-sectoral coordination are the two things that we talk about quite a lot. But in the spirit of multi-sectoral and sectoral and stakeholder coordination, how do we strengthen the kind of people, private, public partnership that we are looking at right now that has emerged? And then also, if we continue the thread of what Mr. Prusty was saying about the tri-sector partnership principle. So how do we build on that momentum? How do we strengthen it further? And how do you foresee the role of each one of us in that building of the momentum? मैंने डॉक्टर भानु से इतना ही पूछा है कि जो हम लोग पार्टनरशिप और कलेक्टिव बिल्डिंग की देख रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि चारों तरफ से लोग एक साथ एकजुट काम करने आ रहे हैं ना, तो पब्लिक भी था उसमें, प्राइवेट भी था, पीपल भी थे, और पार्टनरशिप भी उठ के आया है. एंड डॉक्टर मिस्टर प्रुस्टी ने अभी भी बताया कि कैसे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट एक साथ काम करने की हम लोग कलेक्टिव का इस लेके हम लोग बढ़ रहे हैं आगे. तो हाउ डू वी टेक इट फॉरवर्ड, और उसमें हम ऐसे इंडिविजुअल मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी रोल वो कैसे देखते हैं इसको आगे लेके जाने के लिए, टू बिल्ड द मोमेंटम. थैंक यू देवर्थ साहब. टफ टास्क है ये समझना कि हम लोग आज यहाँ क्यों बैठे हैं. जस्ट एक रिट्रोस्पेक्ट करें कि हम क्यों, क्या किए हम जिसके वजह से यहाँ बैठे हैं. पुष्टि साहब ने एक जो रुवांडा क्राइसिस की बात की, या बात किया भुज का, बात किया उड़ीसा सुपर साइक्लोन का, जिसके आधार पर इंडिया में भी बहुत सारी तेजी आई और हम लोग धीरे धीरे अपना काम करने लगे. इस दिशा में ह्यूमैनिटेरियन स्पेस में जगह मिली. हम जगह मिलने की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत इच्छा होती है कि हम लोग काम करें, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है. तो वी आर हैप्पी, या हम खुशनसीब हैं इस मामले में कि हमको मौका मिला है और हम आज यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं. रिसोर्सेज अगर दूसरे रूप में देखें तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई क्रंच नहीं रिसोर्स का, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं है. फीलिंग्स हैं, दान देने की फीलिंग है, चैरिटी करने की फीलिंग है. जो आप कर रहे हैं उसकी फीलिंग नहीं है कि हम चिंतन करें, हम चर्चा करें, हम सोचें कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे. मुफ्ती साहब ने एक ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन की भी बात कही कि जब उन्होंने शुरू किया सोचना तो वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोच रहे थे,
लेकिन बाद में जब क्राइसिस देखा उन्होंने तो उनको लगा कि नहीं, जब तक लोकल लेवल पे हम काम नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। तो यहाँ मुझे प्रेरणा देने के लिए दो चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। एक तो पहली चीज ये है कि पहला परामर्श जिससे मुझको प्रेरणा मिली कि केवल किसी भी व्यक्ति को इस सेक्टर में लाने के लिए, इस पर काम करने के लिए शुद्ध हृदय होना, दयालु हृदय होना और प्रकाशमय हृदय होना ये आवश्यक है। अगर किसी के पास दिल इन तीनों चीजों के बारे में सोचता है, शुद्ध, दयालु और प्रकाशमय, हम प्योर हैं, हम दयालु हैं लोगों के प्रति, जिनको भी देखते हैं दुख में हम उनकी मदद करना चाहते हैं, एंड उनको प्रकाश दिखाते हैं कि तुम भी ऐसा करो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। तो शायद अगर ये ही हम सोचें, हमारे पास 1 रुपए का रिसोर्स नहीं है, फिर भी हम वो काम कर देंगे जो बहुत पैसे वाले लोग, अंबानी जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक तो मेरा पहला मानना ये है। दूसरा मेरा मानना है कि चूंकि हम खुश नसीब हैं, हम सारे लोग जितने हैं या जो लोग फील्ड में कहीं भी हैं इस तरह का काम कर रहे हैं। किसी ने पूछा था किसी से कि क्या विश्व का उत्थान संभव है? आजकल सारी दुनिया में निगेटिव 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 सारी चीजें, गलत बात कही जा रही हैं कि साहब ये हो रहा, उनको मारो, उनका लूट लो, ऐसे कर लो। भाई भाई को नहीं देख रहा है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, छोटी सी जायदाद के लिए गोलियां मार दी जाती हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? ऐसी में कुछ भी हमारे एक के करने से कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। अगर हमारे 130 करोड़ की पॉपुलेशन है तो हम उसमें अकेले करके क्या कर लेंगे? तो ये कहते हैं कि शुद्ध और अच्छे कर्म अगर हो हमारे, प्रशंसनीय और अनुकरणीय आचरण हमारा हो, तो विश्व का उत्थान संभव है। तो हम अपने क्षेत्र में, गांव में, शहर में, देश में कहीं भी करना चाहें, ग्लोबल लेवल पे करना चाहें, तो केवल इन 4 टेस्ट में, 4 बातों से अपने को हम मेजर करें। दीज आर मेजरिंग टूल्स कि हमारा काम शुद्ध है कि नहीं, हमारा काम अच्छा है कि नहीं, हमारा आचरण इसमें प्रशंसनीय और अनुकरणीय है कि नहीं। अगर ये 4 टूल्स हम देखते हैं तो शायद हम सही हैं। चाहे कोई मेरे को गलत कहे, हमारा कॉन्शियस अपना कहता है कि हम इसमें। तो हमारी जो पार्टनरशिप है जिसकी बात हम कर रहे हैं, पार्टनरिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, वो पहले हमारे से ही शुरू होती है कि आर वी थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू बिकम अ पार्टनर टू सच ऑर्गेनाइजेशन, या डू वी थिंक दैट वी शुड बी? इफ वी शुड, आई शुड, देन आई विल बी whatever it is। मेरे पास पैसे हैं नहीं हैं, इट्स इम्मेटीरियल। क्योंकि पार्टनरशिप होने के लिए, अच्छा काम करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती है अगर हम करना चाहें तो। हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिनके पास। लखनऊ में एक साथी हैं हमारे, वो साइकिल पर प्लांट्स को लेकर के चलते हैं, झोले में बांध करके, और जाके लोगों के वहां लगाते हैं। कोई वर्कशॉप, कोई मीटिंग हो, वो अपने आप, आपको अगर उनको मालूम हो जाए तो बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। एक संस्था ने उनको एक मारुति वैन डोनेट कर दिया कि भाई आप इस पे जाइए क्योंकि इससे आप ज्यादा काम कर पाएंगे। तो मारुति वैन लेके जाते हैं, बट वही उनका अपना पहनावा, वही चीज, उनके पास 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे, आप दे दोगे तो आपकी चीज वहां पहुंचा देंगे, और जिससे मांगते हैं कोई ना नहीं करता उनको। तो ये हमारी फीलिंग होनी चाहिए। और हमारी विजन क्या है? ये जरूर है कि आज जो विजन हम शेयर कर रहे हैं, जो बातें हम शेयर कर रहे हैं, जिस चीज से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो साइंस मिला हुआ है, सोशल साइंस है, इकोनॉमिक साइंस है। हमारे वहां वो सारे जितने भी साइंस की हम बात करते हैं, वो साइंस मिल करके इस फीलिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, सो दैट वी प्रोवाइड समथिंग विच इज रियली वैल्यूएबल। तो वो कैसे करें, आज मेरे ख्याल से स्फीयर के साथ मिलकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या फिर जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चाहे यूनिसेफ हो, चाहे सेव द चिल्ड्रन हो, चाहे ऑक्सफैम हो, चाहे जो केयर हो, कोई भी संस्था है, या आप इंडिविजुअल हो, ऑल आर इक्वल। और उसमें हम जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सोशल प्रिंसिपल्स और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको ऐड करके मुझे लगता है कि पार्टनरशिप की कोशिश करनी चाहिए। और जो अभी कहा गया कि जो हमारे प्राइवेट पार्टनर हो, हमारे पब्लिक के लोग हों, तो इन सब के साथ मिल करके
हम पीपल पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे हम करें। तो मुझे लगता है कि केवल यही सिद्धांत कि हम अपने अंदर एक भाव लाएं कि हमें ये करना है, एंड देन वी विल बी एबल टू डू। अदरवाइज हम केवल ये कि रिसोर्स मिलेगा तो ये करेंगे, ये चीज होगी तो ये करेंगे, ये शायद सफल नहीं होगा। करेंगे हम जरूर, करते हैं जरूर, लेकिन ये सफल नहीं होगा, ये मेरे मन में बात आती है। सो आई विल स्टॉप हियर ओनली एंड आई विल थैंक यू ऑल कि यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भानु। और आपका जो बात है ना कि अगर हम लोग लोकल एग्जाम्पल्स जो है उसको अगर ग्लोबली देखना चाहते हैं, जो पृष्टि साहब ने भी कहा था कि ग्लोबली हमारे जो लोकल काम है उस एविडेंस के बदौलत अगर हम लोग ग्लोबल थियोरीज को लेके चलते हैं तो दैट मेक्स मोर सेंस, इंस्टेड ऑफ कि ग्लोबली हम लोग थ्योरी बना ली और उसको फिर लोकल में फिट करने की कोशिश की। तो और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी, जो डॉक्टर भानु ने कहा। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पैनल में एक बच्ची भी है, वो कम्युनिटी से ही आई है, वो दिल्ली की कहीं जगह में रहती है, दिल्ली साउथ में रहती है। हमारे साथ सपना है। सपना अपने कम्युनिटी में बहुत ही एक्टिव है और उसने उसका यहाँ पे मौजूद होना इसी बात का साक्ष्य देता है कि उसने कितना काम किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है कोविड के टाइम पे। और सपना अपने कम्युनिटी में सिर्फ लोगों को एडुकेशन के बारे में ही नहीं कि मैं एक बच्ची हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मुझे लगता है एडुकेशन हमारी राइट है, हर बच्चे की राइट है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हर बच्चे को वो बोलती है, उनके फैमिलीज को बोलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कोशिश करती है, उसने खुद ट्रेनिंग भी लेके रखा हुआ है टास्क फोर्स की। हम लोग कम्युनिटी लेवल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात कर रहे थे, कल भी किए हैं, आज भी सुबह से कर रहे हैं। तो सपना ने अपने से ट्रेनिंग भी लेके रखी है एंड शी नोज हाउ टू be a part of the task force, how to respond to immediate crisis in the community. तो वो काफी दिन से इसमें काम कर रही है। एंड I'll ask सपना कि सपना आपको क्या लगता है कि बच्चे और युवाएं, उनका अगर योगदान रहा तो वो कैसे अपने आप को भी सुरक्षित बना सकते हैं, और भविष्य में भी अगर पैंडेमिक के जैसा अगर कुछ हुआ, या फिर पैंडेमिक को भी छोड़ देते हैं, अगर हम कोई भी क्राइसिस हुआ तो हम उससे जूझने के लिए अपने आप को कैसे तैयार रख सकते हैं। बस इतना ही हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सपना है और मैं दिल्ली से हूँ। और आज मैं आपको बता रही हूँ कैसे हम लड़ सकते हैं। जैसे पिछले बार जो कोरोना महामारी आया था उसमें हम ज्यादा एक्टिव नहीं थे, हमें नहीं पता था कि ये कैसी बीमारी है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन जब हमें इसके बारे में पता चला तो हमें जानकारियां मिली। अगर भविष्य में ऐसी कोरोना महामारी दोबारा आती है, जो मेरे समुदाय के लोग हैं, हम पहले से ही एक्टिव है, जो युवा जो बच्चे हैं वो समुदाय में अपना योगदान दे सकते हैं। जो युवा, अगर कोरोना महामारी फिर से अगर हर चीज बंद हो जाती है, बच्चों की शिक्षा, जो युवा है वो अपनी मदद कर सकते हैं बच्चों की शिक्षा में, नई नई चीजों के बारे में बच्चों को बता सकते हैं, नई नई एक्टिविटी करवा सकते हैं, और बच्चों पे कोई बुरा असर ना पड़े, मानसिक और शारीरिक शिक्षा का भी ध्यान रख सकते हैं युवा। और जो हमारे समुदाय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हेल्पलाइन नंबर के बारे में नहीं पता है, जो युवा जाके उनको समुदाय के लोगों को हेल्पलाइन नंबर के बारे में बता सकते हैं। अगर मुसीबत के वक्त युवा समुदाय में मौजूद ना रहे, जो वहाँ के लोग रहते हैं समुदाय के, वो हेल्पलाइन नंबर की मदद से अपना काम करवा सकते हैं। और जो युवा है समुदाय के, वो सभी के घर पे जा जाके लोगों को बताते कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं, उसके क्या लक्षण है, ये सब। और हम जो बच्चे हैंगे वो तो ज्यादा मतलब वो उनको इन सब चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी बच्चों के साथ जो मीटिंग करते हैं हम उनको यही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी बीमारी है तो पहले हमें मास्क, सैनिटाइजर, और घर से निकल रहे तो मास्क का उपयोग करें, बाहर से घर के अंदर आ रहे तो सैनिटाइजर का उपयोग करें। अगर हम ये सब बच्चों को पहले से ही बताएंगे तो बच्चे अपने घर में जाके बता सकते हैं, जो उनके घर वाले वो अपने समुदाय में बताएंगे, फिर वो अपने मतलब जो रिश्तेदार उनको बताएंगे, उससे हम बच्चे के थ्रू एक चेन बनवा सकते हैं जिससे लोगों को पहले से ही पता रहे। धन्यवाद। बहुत खूब, थैंक यू सपना। आपने जो हम लोग को कहा वो
I think it's very practical कुछ set of actions जो हम लोग actually कर सकते हैं हमारे communities में, और in fact even in our families also as individuals we can follow these steps. तो इसी बात की सूत्र को सामने रखते हुए हम लोग सुने कि हम लोग लोकल कम्युनिटीज के साथ कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम लोग कैसे नए एक्टर्स जैसे कॉर्पोरेट्स को कैसे पार्टनरशिप के दायरे में लेके आ सकते हैं. तो हमारे साथ विक्रांत है, एंड विक्रांत इज द CEO ऑफ स्फीयर. आप सभी उनको जानते हैं, बट विक्रांत का एक ये भी है कि he has a very difficult job. He has been leading the Sphere collective for quite some time now. And he has to actually bring all of us together on the same platform, get our concurrence for different issues, and take all of us together forward. So I really appreciate, Vikrant, the difficult job that you are doing. But बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि he is actually a certified trainer for a lot of things. He is a certified project management professional. He is a black belt 6 Sigma. He is a master trainer on CHS, Sphere, and other standards. He is also an experienced facilitator, and he is also a very good speaker. And I would expect Vikrant, you could give us some pointers on how do we see. We have been talking about collective action and building the momentum and building the partnership. But एक चीज ये भी है कि हम लोग responsibility की तो बात कर रहे हैं, but going one step forward, how do we make it into collective accountability? How do we ensure collective accountability, especially looking at so many things like the IAG Sphere relationship, the IAG Sphere SDMA relationship that we are looking at in the future. So how do we ensure collective accountability from the members and also in this framework? Difficult question for difficult job. Good. I think it's a very interesting process which is going on. बड़ी अच्छी एक रोचक प्रक्रिया चल रही है जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 16 साल से जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ as Sphere. Difficult है, maybe I think that's keep me challenging also, and that's perhaps is what's keep me going in on this. तो मैं इस question में try to also bring in your earlier question on the public-private people's partnership in this discussion, और कि क्या हो रहा है. Maybe काफी लोगों को तो मालूम है थ्रू वेरियस कंसल्टेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स जो आते होंगे, लेकिन शायद मैं भी आज मौका है मैं चर्चा के रूप में भी आपके सामने रखता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे इसकी परिकल्पना की जा रही है. पब्लिक प्राइवेट पीपल्स पार्टनरशिप, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हुई हैं लास्ट 2 years में अराउंड दिस आइडियाज, which ultimately leads towards the collective accountability. पृष्टि जी ने प्रिंसिपल फिलोसॉफिकल तो बताया हमको कि सिविल सोसाइटी, बिजनेसेस, दैट इज कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, ऑल थ्री टुगेदर एज अ कोलैबोरेशन. हम लोगों इन तीनों के साथ में ही पिछले 2 साल से बहुत चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे इफेक्टिव वे में कुछ कोलैबोरेशंस बिल्ड भी हो गई हैं. और बट और 2 स्टेक होल्डर जो है एकेडमिया और मीडिया, हम उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं इस लार्जर थिंकिंग में. तो आई थिंक ऑल मेजर स्टेक होल्डर्स के साथ में डिस्कशन चल रही है. तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो अब हम आगे की कल्पना देख रहे हैं कि हमने काफी कॉर्पोरेट्स के साथ में पहले कंसल्ट किया कि कैसे रिसोर्सेज को पूल किया जाए. कॉर्पोरेट, सिविल सोसाइटी मिलके, गवर्नमेंट के साथ में मिलके कैसे हम रिसोर्सेज को पूल कर सके. हमने उसके लिए काफी पहले, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो देवता पूछा था वो मल्टी सेक्टर मल्टी स्टेक होल्डर का था, तो मल्टी सेक्टर में हम जा रहे हैं. हमने मल्टी सेक्टर वाइज कंसल्टेशन की, इस वॉश सेक्टर कंसल्टेशन विद कॉर्पोरेट्स, वॉश सेक्टर कंसल्टेशन विद CSR, कि कैसे वॉश सेक्टर के जो कॉर्पोरेट्स हैं, ट्रस्टेड कॉर्पोरेट्स हैं, और जो CSOs हैं, वो आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने सभी सेक्टर्स की कंसल्टेशंस की. तो उसमें से निकल के कुछ आइडियाज निकल के आए, लेकिन उसको वैलिडेट करना, उसके लिए कमिटमेंट लेना भी जरूरी था. तो सेकंड स्टेज हमने 50 कॉर्पोरेट हेड्स को इंटरव्यू किया, कुछ गवर्नमेंट के पर्सनल्स को इंटरव्यू किया, कुछ हमारे स्फीयर के मेंबर्स को इंटरव्यू किया थ्रू एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट कंसल्टेंट. इंडिपेंडेंट
इंटरव्यूज हमने करवाए हैं और उसमें से निकल के कुछ आइडियाज निकल के आए हैं कि कैसे उसका आगे की रूपरेखा बनती है। तो अभी आई थिंक ऑल दिस आर वर्क इन प्रोग्रेस। तो अभी जो आइडियाज आ रहे हैं, जब हम सुनते हैं सब डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में वर्क कर रहे हैं। CSR लॉ इज हैविंग इट्स ओन limitations and boundaries, and corporate people are bound to think about the limitation of those boundaries to make it happen, right? और सिविल सोसाइटी में मेरा जो पहले का अनुभव रहा है, मैं सिविल सोसाइटी में अब तो आई एम 16 years completely insider and deeply into it, but I came outside from my experience with the army and more on the corporate learning जो देवदत्ता ने बताया, मेरा Six Sigma processes की प्लस जो PM BOK का जो मेरा ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग था पहले थोड़ा मोर कॉर्पोरेट और अदर क्वालिटी प्रोसेसेस का ज्यादा था। ओवर द ईयर अब नाउ आई थिंक आई एम मोर एंड मोर ह्यूमैनिटेरियन इनटू इट। तो हम सिविल सोसाइटी में जो बातचीत करते हैं, हमारी वोकैबुलरी जो है और हमारा जो सोच रहा है पिछले स्पेशली 1.5 दशक से, जिस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशंस की सोच रही है, वो पूरा का पूरा डिस्कशन और वार्तालाप हमारा ऐसे होता है यू नो वेयर the corporate and the government often takes up a different language and different ways of doing things. तो यहाँ पे collaboration को build करना, public private partnership को build करना एक जरूरी था कि सबकी vocabulary और सोच को harmonize करना. Of course, there are thought leaders, Pushti ji, and there are thought leaders every year who connect very quickly. But how to get the masses around it? I think we needed a framework like that. जब स्फीयर की शुरुआत हुई तो सभी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी ही थी। मैं कह रहा स्फीयर वाज अ इंस्ट्रूमेंट और टूल जिसने उनको एक कॉमन वोकैबुलरी दी, एक कॉमन फ्रेमवर्क दिया साथ आने के लिए। आई थिंक आज हमें एक वैसे फ्रेमवर्क की जरूरत है कि जिसमें अब कॉर्पोरेट्स और जो कॉर्पोरेट की प्रैक्टिसेस हैं, जो सिविल सोसाइटी की प्रैक्टिसेस हैं और जो गवर्नेंस की टॉप थॉट्स चल रही हैं वो लेके चलें। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो ESG एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की तरह आया है, जिसने कॉर्पोरेट्स को ऊपर उनकी कंप्लायंसेस के लिए मजबूर कर रहे हैं कि they need to now comply to the ESG की जो requirements हैं। ESG जो लोग आप नहीं जानते हैं, environmental, social, governance, 3 वर्ड ESG, इन तीनों के अंडर कुछ compliances requirements आ रही हैं जो कि corporates के लिए एक becoming a requirement there for them to report on to it। ठीक है, उसी तरह हमारे सिविल सोसाइटी में ह्यूमैनिटेरियन अकाउंटेबिलिटी के लेके हुए हमारे पास में स्फीयर था, कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स हैं और अदर सेक्टर स्टैंडर्ड्स थे। अब हमने जब कंसल्टेशन जो चल रही थी कॉर्पोरेट के साथ में और इंक्लूडिंग गवर्नमेंट को, हमने कहा इसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है, इसलिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अलॉन्ग विद NIDM, NDMA के साथ में लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व किया। उनकी एक इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनको इसका एपेक्स बनाया। एक्चुअली हमने कहा इसकी ऑनरशिप जरूरी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रहे, राइट? तो इसलिए हमने उनको टेक्निकली सपोर्ट भी किया। जो सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का हम वर्क कर रहे हैं डिफरेंट SDMAs के साथ में, हम SDMAs को ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स देते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। सेम आइडिया, वी हैव पुट सम ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स कैपेसिटी इन द IICA so that they own this whole process and all. तो अब हमने जो ESG की compliances रिक्वायरमेंट हैं और जो स्फीयर कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स, यहाँ जो देवदत्त ने बात की, जो कॉर्पोरेट की प्रैक्टिसेस हैं, 6 सिग्मा क्वालिटी प्रोसेसेस, आई थिंक आप लोग आई डोंट नो कितने जानते हैं, बहुत अच्छे वेल इवॉल्व्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स हैं फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उनकी जो और प्रैक्टिसेस हैं लाइक रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को लेते हुए, तो हमने सबको एक टूल में इकट्ठा करना शुरू किया है। We are trying to harmonize all of this together into a one single product, and that product is का हमने जब शुरुआत की थी तो we were thinking of calling it partnership standards, right? अभी भी हम उसका ड्राफ्ट नेम पार्टनरशिप स्टैंडर्ड्स के साथ ही हमने इसकी कंसल्टेशन की है सभी के साथ में। उसका फर्स्ट ड्राफ्ट हैव गॉन इनटू कंसल्टेशन एंड वी गॉट गुड रिस्पॉन्स, फीडबैक्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टेक होल्डर्स। सेकंड ड्राफ्ट के लिए तैयारी चल रही है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय मार्च Indian Institute of Corporate Affairs along with Sphere and most likely NIDM jointly we will bring out this publication called Partnership Standards, or we will still figuring out what the name it has to be given. But a product will come which will bring corporate practices, which will bring humanitarian practices and the essential governance practices all together into one product. And I think this product has a promise or maybe has a prospect of what Sphere have been able to bring different humanitarian actors together
it's going as it has a promising prospect of bringing different stakeholders together, and then bringing the next level of processes which will ensure the collective accountability. So I think ये एक development है which I wanted to share with all of you in this forum, though it has been sharing is happening through other regular, whenever consultations happen, the reports goes out, consultations happen, we invite everybody there also. Now, second step is toward visioning the local level accountability, which was also coming out of this, and the collective accountability is. मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू रिप्रेजेंट HCL फाउंडेशन. पुष्टि जी ने कहा कि CSR को हमारे मेंबर होना जरूरी है, और HCL फाउंडेशन अभी हमारी एक्सकॉम में है, मेंबर हो गए, वो बहुत पहले से मेंबर हैं, और आज के AGM के एजेंडा में रिलायंस फाउंडेशन की एप्लीकेशन है मेंबर बनने के लिए. वेरी गुड, राइट. तो एंड देयर आर फ्यू मोर इन द पाइपलाइन. ये उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर दी है. देयर फ्यू मोर इन द पाइपलाइन टू से देयर. सो दैट्स हाउ द प्रोग्रेस इज हैपनिंग आल्सो. तो हमने HCL फाउंडेशन के थ्रू आई गॉट अ चांस टू गो टू नागालैंड. वहां पे CSR कॉन्क्लेव हो रहा था, एंड आवर फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर वाज देयर फॉर 3 days. और बड़ी अच्छा आई थिंक डेवलपमेंट था उसमें कि ईच डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेड द प्रेजेंटेशंस कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे वी नीड स्पोर्ट, राइट. And then there was array of corporates present there. There was some civil society organization present there. SDMA also was there and all. So they were looking at that discussion कि इस areas में चाहिए. So I was trying to say where the gaps are and how it can be more expedited, right? So one way is the new standards which will going to come up, which we are harmonizing. Definitely it will become a tool to scale it across the country and all. But at a lower level, जब हम district IAGs की जो discussion कर रहे थे आपके सबके साथ में, district magistrates और DDMA with the help of district IAGs identify कि हमें response की ये capacities चाहिए, हमें DRR mitigation के लिए ये capacities चाहिए. तो जो हमने URS coordination की बात कर रहे हैं response की, और जो resilience coordination की बात कर रहे हैं, we help them identify the mitigation projects, we help them identify the response recovery projects over there. And then at a district level with the support from the state level, a mechanism, a PMU which can be created, which facilitate converting these ideas into proposals and projects, because that's a limitation of corporate law, right? So our technical support can help them convert into those kind of things, and there can be joint projects between these, supported by the corporates, between the government, by civil society together. And in this framework of this, we also look at a joint collective accountability. And this is the future, looking at the people, public, private partnership at a very, very local level. And I think all the ideas of a resource pooling happening at a very, very local level. And in this framework, we are looking at compliances which corporates need to do, not just by contributing funds, but also now from the climate COP requirements, what compliances they need to look, what compliances we all need to look at. Prime Minister is talking about Mission Life, which require us to be compliant. Why then AC should be at 18 degrees, when we can easily survive at 26 degrees. So all these accountabilities weave into it. I think all this together can put up a framework which could be a framework for collective accountability, and also how it can be operationalized. I think I've taken more time, but I pause it here. Thank you so much. Thank you, Vikrant. And you can hear the round of applause from the house itself. So I think one very good news is this partnership standards, and the other one, looking at localization and accountability and partnership in the same framework, is a very good idea, and I think we should really collectively work towards this. So moving on, we have a member of a representative of a CSO here as well. And Anindit Rai Chaudhary is the Chief Program Officer at Save the Children India, and has as many as 24 years of professional experience in the international development sector. बहुत बोलेगी जाओ. Question. अच्छा question पूछे. ये ना बहुत embarrass करते हैं मेरे. Question पूछे. So the question is from the perspective of a child rights organization, looking into the fact that children are our future, and if children are capable enough to protect themselves and their families, and and they know how to combat any future humanitarian crisis, respond to any future humanitarian crisis, and keep themselves safe and their communities safe, then I think our future
is also safer in a way. So coming from the perspective of a child rights organization, how do you feel that we can take this momentum of collective action and partnership and this ethos forward? Thank you very much. Sometimes वो embarrassing लगता है ना, ये किया है वो, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने. मैं तो ऐसे ही आप लोगों के साथ आ गया बस बात करने. First of all ये बताना चाहता हूँ मैं, हिंदी is not my mother tongue, so please pardon me. बंगाल से हूँ, मेरी हिंदी उतनी खास ठीक नहीं है, तो don't mind that at all. गड़बड़ होगा. गड़बड़ होगा. I'm almost sure गड़बड़ होगा. Mic, okay, microphones, okay. So गड़बड़ शायद होगा, but don't look at the गड़बड़, मेरी भावनाओं को समझिए. You know, sometimes often we talk about the fact that के बच्चे हमारा future है, children are our future. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. All of us have heard it at various points in time. But, and Debatrita's question also had that, but it worries me a little bit. I'll tell you why it worries me. It worries me because often when we talk about the fact that बच्चे हमारा future है, हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे अब हैं. ये जो सपना हमारे साथ बैठी हैं, वो future में नहीं बैठी है, वो अब हैं. She exists now. अगर हम आज भूल जाएं बच्चे को और हम ये सोचते रहे कि ये हमारा future बनेंगे, ये हमारे देश का, you know, they are going to take over, they are going to take care, they are going to lead, then we are actually forgetting them now, their existence now, and that is a big worry. As an organization, we continuously believe that children can't wait. बच्चे वो wait नहीं कर सकते कि उसके बाद कुछ होगा, इसके बाद. They are now, their needs are now, their problems are now. You know, मेरा पहला, I mean, there are people who are far more experienced than I am. My first exposure to humanitarian work was in 2001. Gujarat earthquake, which was many years ago, 21 years ago. I was young. I used to be a young person then. What was and I used to work for an organization, a UN organization called IOM. And we were working with salt pan workers of Odisha who were based out of Gujarat in Bhuj, who were terribly affected. And that was the premise in which we were working. उसी पे हम काम कर रहे थे. लेकिन एक चीज उस वक्त मेरे लिए, and you know, you would imagine उस वक्त मैं एक project coordinator level में नौकरी करता था. But even at that level, एक चीज तो बड़ा clear था, that unless you had partnerships built with the people on the ground, आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा. And I think that is the principle and premise जो आज भी सच है. And I think we often talk about public-private partnership. And we talk about the government and their roles. We talk about corporations and their roles. We talk about civil society organizations and their roles. लेकिन necessarily हमेशा civil society organization is not equivalent to the people on the ground. It may not be. There could be a difference. थोड़ा फर्क वहाँ भी हो सकता है. I think जब तक हम बच्चों के साथ, क्योंकि मैं एक बच्चों के संगठन से आता हूँ, बच्चों के साथ directly partnership नहीं करेंगे, उस लेवल का क्लैरिटी कि क्या जमीनी तौर पे क्या होना चाहिए, वो शायद कभी-कभी मुश्किल हो जाएगी. You know, I was listening to all of us and very interesting points of view, great experiences. But बुरा मत मानिए, मुझे सबसे अच्छा सपना की बात लगी. और इसलिए लगी क्योंकि सपना was talking from the ground. Her reality was lived reality. It was an experience that she has lived. सपना जिस तरीके से महसूस किया है humanitarian action को, सपना जिस तरीके से तकलीफ को महसूस किया है, to be honest, शायद इस पोडियम में या यहाँ पे बाकी जो लोग हैं, हमने उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं किया है. ये सच है. बुरा लग रहा है किसी को, फर्क नहीं है, यही सच है. This is the truth. जब तक हम ये सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे कि सपना की रियलिटी सपना से अच्छा, या अच्छा ही होगा शायद, अच्छा सपना से अच्छा कोई और नहीं समझ सकता, I don't think we are going to be able to make justice or do the justice to the kind of participation of children that we want in the conversations that we have. Even within Sphere, I think what I really appreciate about Sphere and something that, which is why we are a part of that process in every which way, we diligently are believers of the Sphere process.
is because of the participation that it allows within it. Dekhiye, to be honest with you, there are enough people in this room and on the podium or otherwise who can create some document or the other on the basis of which we can do things. कोई काम करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना और उसके लिए फंड रेज करना मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट नहीं है. But Sphere is an institution that constantly engages into the dialogue of partnership. Partnership के लिए constantly वो, and it makes the job far more difficult. I mean, I'm sure Vikrant will accept with me कि अगर वो सीधा मैं अपना काम करता बड़ा आसान होता. उसका आर्मी का बैकग्राउंड है, सीधा काम करने का आदत है इसको. But the truth is that the space that he's in has actually forced him to actually see it from a perspective where more and more conversations come into play. And I think that is a very critical point of Sphere, and which is why we are all here. And I think मैं ये सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, आखिरी में बोलने का एक प्रॉब्लम है, सारी चीजें लोग बोल देते हैं, आप बोलेंगे क्या? पर एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये कि मैं ऑलमोस्ट स्मार्ट बन रहा हूँ ये बोल के मैं वो सारा बोलता आप बोल रहे जो नहीं वो नहीं है. I'm just joking. But the truth is that I would say that if there is a space for children to come up and partner in conversations with us and help in designing, अगर बच्चे खुद अपने समस्याओं को हमारे सामने रख पाए और बच्चे उन समस्याओं का जो हल है, जो सॉल्यूशंस है, वो अगर खुद निकाल पाए और वो सॉल्यूशंस पे हम सब काम कर पाए, I have a feeling we'll probably do a better job in being more responsive to the changes that we want to bring. जो changes, जो बदलाव हम बच्चों की जिंदगी में लाना चाहते हैं, वो changes हम शायद better ला पाएंगे. मेरे पास 30 सेकंड और है. The other point I wanted to make, which is a very short one, is that I think we have often, and I'll say this here, अपने लोग हैं, मुझे कोई डर नहीं बोलने के लिए, we have often been a little donor driven. बड़े dependent हो जाते हैं कि donor किस चीज पे पैसा देगी, किस चीज पे नहीं देगी. I think it is time for us to come together and also drive programs and work on the ground in a way that donor is driven to give money for us for that reason. अगर हमारे अंदर, from amongst us, हमारे अंदर की competition अगर खत्म होगी, तभी वो संभव है. आज क्या होता है, डोनर बोलता है मैं सिर्फ इन 3 चीजों पे पैसा दूंगा. वो आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो आपके लोकेशन स्पेसिफिक है नहीं है, वो नीड स्पेसिफिक है नहीं है, आई डोंट केयर. दिस इज व्हाट आई वांट टू आई डू इट इन वन डे. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. एंड वी ऑफन से अच्छा ये नहीं काम करेगा तो कोई और कर देता है. एंड इट्स ट्रू, ये बड़ा कॉमन परफॉर्मेंस है हमारा. If we are able to come together, particularly from the humanitarian point of view, agar Sphere ke through hum fundraising kare and we have a common voice, donors will be forced to give money for purposes that the needs are for. Jahan zarurat hai us pe paisa aayegi, rather than jahan main karna chahta hu ya chahti hu wahan pe paisa aati hu. I think that's the other change that we have to bring, which is why I think Sphere provides us with a tremendous platform. This is not going to be easy. It's actually going to be the hardest thing to do. बड़ा difficult सा सवाल है, but I think there is a possibility for us to do it. And then my third point is, we also need to, and I think someone in the audience reminded me, and she has worked with my mother, so you can imagine I automatically became a little soft the moment he made the reference. But he said something and I really appreciated. He said, and I quote, जब तक हम छोटे संगठनों को इस कर्मस्थल में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में, इस स्फीयर में या स्फीयर के अंतर्गत जब तक हम छोटे संगठनों को नहीं लाएंगे, तब तक we will probably not be able to actually cater to the real problems on the ground. And it is not enough for Save the Children or UNICEF to be a partner of Sphere. I think it is also important for the organizations on the ground, grassroots organizations, to equally be owners of that process and partners. That's what I'll stop. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, Dada. And I think we came to 2 more new concepts. हमारे पूरे पैनल में हम लोग काफी सारे नए concepts और नई framework, नई beginnings की बात करी है. तो 2 more new concepts, I think local and big, both हमारे equal ownership होनी चाहिए, or maybe a little positive discrimination as well. And also the collective bargaining. And I think that is one very big agenda that we should have on our plate. Because donor-driven programming is now becoming
a very stressful part of our work, all of us, for all of us, जहाँ पे भी हम जो भी है. I would request your indulgence for 10 more minutes because I feel that this panel has had a lot of new concepts, new ideas to offer to us for reflection. But at the same time, we should open this session up a little and try to hear from the rest of the people here in the room. What are your ideas on or reflections or recommendations or suggestions or thoughts on this issue? Because I feel it's not only one person's job or two persons' job or one organization or one network, but it is the job of everyone. It is the owners of everyone. So I am very sorry, but to give maximum people a chance, I would request you to limit yourselves to 2 minutes, monitor yourselves to 2 minutes. And if I could see some hands raised. Okay, I see Aniruddha and I see Bhai Sahab, आपको भी हमने देखा है. So maybe Aniruddha, you can go and then आपके पास भी आएंगे आप. Actually, at the end, मेरा is okay. पहले मैं बता रहा हूँ अनिंदित. So thank you for remembering what I said and quoting that. सिस्टम अप्रोच को भूलना नहीं चाहिए. कुछ कुछ चीज है ऐसा जो सिस्टम अप्रोच में डालना है कि और तभी हम प्रोसेस का जो बात कर रहे हैं, प्रोसेस कैन बी स्ट्रेंथेन्ड. ये मेरा ऑनेस्ट सबमिशन है सभी के लिए. जब सिस्टम अप्रोच हम उसका बात करते हैं तब हम वोकैबुलरीज का जो चेंज करना है वो भी करना है, क्योंकि ना आई वुड लव टू see that all of us are talking in the same tone, same line, and we have developed a common understanding on what the sphere standards are. So that is latest publication is Spheres Handbook 2018. So on that there are certain sections that human rights issues are mentioned, commitments are mentioned. So whether we are committed to fulfill those things, it is a question to me. It's an introspection. That is what is very much required. Thirdly, many times we have talked about partnership. Partnership can be formed. Partnership cannot come from the top, from the heaven. Partnership can be formed, and partnership formation, this process, it needs a very this thing means strong commitment, conviction. तो पहले हमको हिडन एजेंडा हमारा होगा, हो सकता है मेरा एजेंडा आपका एजेंडा मिल नहीं सकता है, लेकिन कॉमन एजेंडा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज क्या है, उसको ढूंढ के अगर हम चाहते हैं जिस स्पेयर के साथ मिलके हम ये काम करेंगे तो हमारा जैसे कि पृष्टि सर का कहना था कैसा ये शुरू हुआ है, तो शुरुआत का उन्होंने कुछ अच्छा खासा ये किया. आई रिक्वेस्ट पृष्टि सर टू जस्ट हेल्प अस डॉक्यूमेंट द होल थिंग, आवर जर्नी फ्रॉम 2006 or 2003, whatever it is. So with this actually I would love to say goodbye for now. When we come and meet again, then we will not discuss all these things. We will discuss what we are taking with us, and then what we have discussed or what we will discuss in the IAGs, in our platforms at the state level. And then we will come back with some new ideas, new solutions, and not only problems. We need to think that solutions are there. So we need to find out those solutions. So with this, I would love to end here. Thank you. Thank you, Aniruddha. And we also love your idea that we need to come up with solutions and not only problems. हम आपके पास आएंगे, पहले आप के साथ.
Good afternoon, everybody. I am Colonel Sanjay Srivastava, and I lead an organization called CROPC, Climate Resilient Observing System Promotion Council. And our organization has been successful in taking up an agenda of lightning and climate action, and that has become a national program. Sphere India has been a big supporter. They always held our hand. In our governing council, Dr. Prusti has been there, and Vikrant has been supportive. So what Vikrant was highlighting, the partnership, that is the most important thing. And what Dr. Bhanu said, अगर आप शुद्ध हृदय से हैं, दयालु हैं और प्रकाशमयी हैं, let bury all your past and come up with a future forward thinking approach to unite with people. That is what is going to give you the strength. So that is very, very important. Partnership. Partnership ऐसे नहीं होता है. आपको भी आना पड़ता है और तभी partnership होता है. Second important point, I'm very happy to see that ESG has been taken as a key point by Sphere. But जो मेरी पिछले 36 साल का एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी का, बाकी ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर का, मैं देखता हूं कि एक वेव चलता है और हम लोग उससे गवर्न होते जाते हैं. ये जो आईपीसीसी का वेव चला है, तो हम क्लाइमेट एक्शन पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं. मेरा ये सुझाव होगा कि अगर हम डिजास्टर को एक होलिस्टिक अप्रोच लें, अदर देन क्लाइमेट एक्शन, there are other disasters also which are at local level, which only humanitarian organization can focus. So I'll request that if we can have a holistic thinking, and सबसे अच्छी feedback humanitarian organization से आ सकती है, and we can have a forward thinking action plan. State IAGs अपने forward thinking action plan अगर sphere को दे, where we can have a national consultation, where state level, where local level, district level, ग्राम पंचायत level interventions are required. So we'll have a roadmap कि हम कैसे, how we are going to take it forward. And there are a lot of good things which are there in the governance, which Sphere always does, everybody does. But one important thing which has happened is single emergency number 112 in India. For any crisis, please go to 112. मैं देखता हूँ लोग helpline की बातें करते हैं, 100 की बातें करते हैं. Request, adopt it, because humanitarian sector is going to be the showcasing the government programs. Government does not have any advocacy platform बताने के लिए, और हमारा platform बहुत important platform होता है, who can go and take it. So these are my points, and thank you very much for the opportunity. Thank you, sir. I think this is very well taken. In fact, not only the 112 helpline part, but also the fact that there are certain hazards and consequent disasters that are nearly invisible, because some are pretty visible, pretty more visible. So we have hands up from 3 persons and okay, 4 persons, but no more than that. And please be very brief. बहुत संक्षेप में बोले. आपसे पहले आपके पीछे में जो है डुअर्स जैसे जो आए हैं, वो पहले, उनके बाद वो भाई साहब खड़े हैं, and then sir, if you could give the mic to the representative from Duers, and then Neelaj Jacket, then मेरा नाम अंबालाल वास्कले है. मैं मध्य प्रदेश बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत अंबापानी का सरपंच हूँ. ऐसा आपात स्थिति कोरोना जैसा आया था समय में, तो हमारे गांव के लोग शिक्षा के स्तर से काफी पिछड़े हुए हैं. एक डर जैसा लग रहा था लोगों में. इस प्रकार के मतलब जैसे समाचार पत्रों में आया और धीरे धीरे जैसा कोरोना का ग्राफ बढ़ता गया, वैसे लोगों में डर और ऐसी संख्याएं बढ़ती गई. लोग मतलब टीका नहीं लगवा रहे थे, भाग रहे थे. जैसे अपने वॉलंटियर हम जाते थे और हम इनके गवर्नमेंट के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और अपने एजुकेट ये इसके सेव द चिल्ड्रन के कर्मचारी के साथ हम जाते थे, तो वो भागने लगते थे. लेकिन हम उनको समझाया और इससे टीका लगाना जरूरी है, भागने से कुछ नहीं होगा. और उनको 2-3 मीटिंग लेके उनको पूरी समझाए कि इससे बचाव होता है, टीका लगाना जरूरी है.
और इस प्रकार से धीरे धीरे सबको हमने टीकाकरण करवाया और मास्क उनको वितरित किया, मास्क वितरित कर किया, सैनिटाइजर और जो कोरोना के जो नियम है बचाव के, वो नियम हमने समझाए हैं। इस प्रकार से काफी हद तक काम किया। और उस समय जो उनकी स्थिति ऐसी हुई कि मजदूर प्लान के लिए बाहर गए हुए थे हमारे गांव के लोग, तो वहाँ की जो कंपनियां बंद हो गई, काम करते थे वहीं पे फंस गए थे, तो उनको हमने स्वयं जाके निकाल के लाए उनको। ऐसी स्थिति में हमको मतलब ये भी उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि उनके रोजगार की स्थिति क्या है और उसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए। तो ऐसी आपात स्थिति में हमको एक्टिव रहना चाहिए और प्लान बना के रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। और हम जैसे ग्राम सभा की एक्टिविटी करते हैं, ग्राम पंचायत का प्लान बनाते हैं, इस प्रकार से इस आपात स्थिति के लिए भी हमको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और Thank you very much. And Abhi, we will need to break for lunch because there is another part of the program before this whole session closes. So we can have this discussion during the lunch. Just one. Okay. Okay, but बहुत संक्षेप में बोलिएगा and all right, 62 seconds. पहले नमस्कार, मैं राजस्थान से डूंगरपुर जिले का हूँ। मैं वार्ड पंच हूँ पाडली गुजरेश्वर का। तो मैंने पहले जब हमारे वहाँ कोरोना काल में बहुत सारी समस्या आ गई थी, वहाँ के लोग बहुत गुजरात हमारे जाते हैं, वो फंस गए थे, हमने लेने के लिए बहुत सहयोग किया। और हमारे वहाँ पे बहुत स्थिति खराब है हमारे डूंगरपुर जिले में। तो वहाँ क्या है कि हमें सब पंचायत कोरम और शील्ड चिल्ड्रन सब मिल के और सभी को हमने ये किट और ये किट बांटे। गरीब लोग थे, उनके घर घर जाके हमने टीकाकरण कराया। और स्कूल भी बंद हो गई थी, स्कूल में भी कि बच्चों को के लिए किट बांटे। यूं करके सभी हमारे पंचायत में मिल के सभी शील्ड चिल्ड्रन मिल के हमने सहयोग किया। और वहाँ के लोग हमारे बिल्कुल टीकाकरण नहीं करने देते थे, तो हम घर घर जाके उनको समझाया। फिर वो मीटिंग रखी, हमने मीटिंग रख के फिर उन सब पंचायत कोरम और शील्ड चिल्ड्रन सब मिल के हमने मीटिंग रख के फिर लोगों को हमने समझाया, घर घर जाके फिर उनको टीकाकरण कराया। तो डेफिनेटली कम्युनिटी ने ओनरशिप तो लिया ही था उस टाइम पे, एंड वी होप कि हम लोग उस ओनरशिप को आगे जारी रख सकते हैं। आई नो बहुत सारे बातें हम लोग को फिर भी सुनना था जो हम लोग सुन नहीं पाए, समय संक्षेप है और लोगों को शायद लंच के लिए भी जाना है। So thank you very much, and we hope to come forward to the come home to the solutions next time we meet. Thank you.